Hello. Good Hi morning, everyone. guys. Good afternoon. On popular demand, Shahid Bhai is back with us here on Menace in the Monk. Shahid Bhai, thank you so much. कैसे हैं आप सब खैरियत? I'm very good. Pleasure to be here, guys. Thank you for having me. Shahid Bhai, everyone's a big fan of yours after our last live. सब Fingers लोग बोल crossed. Fingers crossed they remain after this one. It was a निधि lot क्या of fun. बोलते हैं ब्रो? कुछ नहीं भाई बस आज it's like the anticipation for Friday, no? But Thursdays are busy days, so काम के साथ बैठा हुआ हूँ और the usual Liverpool rigmarole is going on. शाहिद भाई, आर यू नॉट टायर्ड? हर दिन एक नया नाम, अभी तो नाम भी रिसाइकल होने लग गए हैं. मनु कोने का नाम मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? I don't know. It's been a disastrous window, actually, which has been salvaged by Sabozlai being an amazing player, okay, Yeah. and McAllister being performing really well. But the thing is, actually, they've made a real hash out of it. Honestly, I'm very worried that इन्होंने deadline day पे कोई Arthur type का या Ben Davis type का ड्रामा क्रिएट कर लेना, क्योंकि दिन गुजरते जा रहे हैं. अब देखें ना, आज सुबह का कोई न्यूज़ नहीं है और आज का दिन भी गुजर जाना है, फिर वीकेंड आ जाना है, फिर मैच आ जाना है. So they're really cutting it close. I would have thought that they would have been in action or being close to closing something, or some rumors would be coming out by now. That whole Andre thing and etc. But it seems to me that they don't. Doesn't look like they have any big plans. I hope I'm wrong, really, because it would be disastrous to go into the season with the squad that they have right now. मानस, तेरे को पता है, डू यू नो दिस? सो दिस इज अपेरेंटली, इन ऑल ऑनेस्टी एंड इन ऑल लाइकलीहुड, ये शायद मतलब झूठ ही है, बकवास ही है, लेकिन अपेरेंटली एंड्रे है ना, सो द फ्लुमिनेंस मिडफील्डर दैट वी वर ट्राइंग टू बाय, राइट नाउ, दैट गाय हैड अ 30 million रिलीज क्लॉज और समथिंग व्हिच वाज ड्यू ऑन अ पर्टिकुलर डेट. कोई एक पर्टिकुलर डेट तक वो 30 million था. वो झूठ है, अपन ने पढ़ा नहीं है ना ऑल ना वो सब. नहीं, यॉर्ग श्मार्टके को पता नहीं था क्योंकि वो डिज्नीलैंड में था. I don't know if that's true or not. And it sounds like nonsense, but I want to know तेरा और शाहिद भाई का opinion. शाहिद भाई, it's been a train wreck, right, Manas? ये यॉर्ग स्मार्ट के appointment has been a disaster. Would you agree? I want to hear what Shahid has to say, because निधि तूने और मैंने Thank तो you, बहुत Hiten. बात की. I would withhold my judgment till the end of the window, actually, because if Still? even now, yes, because the quality of the players are pretty good. Even Endo is not a bad player, right? I looked at him, I rewatched it. So if they can get 2 more players and they can get out of this with let's say 7 points out of 9 by the time the window closes, and a draw away to Chelsea is not a bad result. By that time, and if you can integrate the players quickly, then it's not a bad window. Like एंडो को तो आपने पहले दिन ही खिला दिया ना. इट्स नॉट लाइक कि आपने रॉबर्टसन या फिबिन्यो के साथ की तरह 4 महीने उनको वेट कर दिया. तो द थिंग वाज कि यार, we wanted the players at the beginning of the preseason. But if you get over the hump and you say, okay, we're going to just throw them straight in, then you need a center back and you need a defensive midfielder, and you're pretty much set. And you did buy 1, 2, 3, 4 midfielders and 1 defender, 5 players, pretty decent reload. But देखिए, वो बात बड़ी simple सी है. This is black or white. This is not gray. You don't get the players, it's a disastrous window. You get the players of the ilk that you require, it's a very good window. So these next 7 days are very critical, and I say this every window because हर window में इन्होंने हमें let down किया है. हर बार इन्होंने हमें proper player नहीं लाके दिए और हर बार हमें ये पागल बनाते हैं. हमें ये, I don't want to use the words, they make a big fool of us. Let's put it that way. Okay, I don't want to use bad language. They make a big fool of us, and I think they've pulled a real heist on us this time. इस बारी तो उन्होंने सही पागल बनाया. यार, तो शाहिद भाई, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको किस बेसिस पे फिर यॉर्ग स्मार्टके पे भरोसा है? मुझे तो देखिए, 3 प्लेयर तो आए हैं ना, ठीक है. अगर 2 आ जाते हैं तो like the job is done. He can leave. We're not going to rehire him because obviously the problem with him is
that he's also not efficient and seamless. So it's also very embarrassing. So I know for sure कि इन्होंने 55 to 60 million की bid 100% Lavia की डाली. Will accept the day after the Caicedo bid. So they literally lost 13 million pounds on the table because they weren't able to do it. And by the way, they also lost Lavia, okay, who apparently was one of their main targets. So he's already made the mistakes. लेकिन हमने इसको बुलाया था summer के लिए. हमें 5 player ला दे, bye चला जाए. ठीक है. Long term, he's not the solution. But listen, later on, when these players are performing, McAllister, Endo, Szoboszlai, and maybe the two, hopefully other players will come, then at the end of the day, he's the one who got them, right? It was under his watch, so he will get credit for that. So George Schmadtke is not the problem, though. George Schmadtke is not the problem, Nidhi. You know that. Jurgen Klopp is not the problem. You know that. No, not Klopp. I'm talking about George Schmadtke. See, it's not... I don't hate him for not doing stuff. मुझे ऐसा लगता है ना शाहिद भाई कि वो केपेबल ही नहीं है, और यहाँ पे ओनर को थोड़ा स्टेप इन... मैंने बहुत बार बोला है कि ये जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, लोग अभी क्या है ना कि ये बहुत लोग बोल रहे हैं क्लॉप की गलती है, ये उसने अपॉइंट किया. अरे क्लॉप की गलती होगी, बट द बक स्टॉप्स विद द ओनर्स. क्लॉप सीईओ थोड़े ना, अपॉइंटमेंट तो ओनर्स को करनी है ना. Let me ask you a question. Who's responsible to make sure Mike Gordon stays in the job? Who's responsible to make sure to direct football? That's not Jurgen Klopp's job. इनको सैलरियां देने, इनके incentives, इनके bonuses, इनको खुश रखना, ये तो मालिक का काम है. ये team manager का काम थोड़ी है. So you lost all the talent all over the club, and you said you were going to sell the club. You messed that up. You said you were going to bring new shareholders in, new investment in. You messed that up. You said you were going to build the stand up and open it on the first opening day. You made us play away from home. Okay? You messed that up. You haven't got the players in. Now you blame Schmadtke or you... ultimately, to make sure Schmadtke does his job is also the owner's job. ठीक है? कि उसको को players लेके आओ भाई. Where are the players? And now we got a 6-pointer on Sunday and we're not ready for it. We don't have the squad. That's the truth. उन्होंने तो players खरीद लिए. Dewsbury Hall और पता नहीं क्या उन्होंने ले लिए. They have their squad ready to go, Newcastle. And we don't. Okay? So we need a type A performance from our team. But the club hasn't backed them up. And so the ownership is at fault, actually. 100%. With regard to the director of football situation in the club. And this whole thing that's going around, KG Klopp wanted power, Klopp didn't agree, Klopp said कि Henderson को contract दो, Milner को contract दो, लड़ाई होगी, वो Mike Gordon चला गया, वो चला गया, ये चला गया, सारे भाग गए. This is look, what's Klopp's... I'll give you another alternate situation. Klopp is sitting there, and they're telling him कि तुमने ये contract renew नहीं करना. And they're not even giving him an alternate to those players. So he's probably thinking to himself, if I let this player go on a free transfer, who are you bringing me? Who's going to replace it? It's such I might as well insist कि इसको रख लो. I'll take a stand here. Because right now you're just asking for a contract. Later on, you're going to have to ask for a player and a contract for that player. So I think actually their hands are tied. वरना ये पागल है, ये क्यों ना older players को recycle करके नए players ले लें? Why wouldn't they? Actually, all the contracts that got renewed this summer, Oxlade-Chamberlain got expired. Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, उनके replacements कहाँ हैं? ठीक है, where are the replacements of the players that got sold? Fabinho, Henderson. Arthur, 5 midfielders have left. You bought 3. You didn't bring 5 for 5. तो इससे अच्छा ना बेचते और इनके भी contracts renew कर लेते. That's what happened last time. So these guys are being let down again and again and again. And I'm sorry to say, I think that this whole Caicedo drama, the proof is in the pudding. उसके बाद 13 million खर्च हुआ है boys. 13. Okay, Endo पे. 115 की जगह 13 हुआ है. 102 किसी बैंक में पड़ा हुआ है. ठीक है? और जो लाविया पे पैसे देने थे वो भी नहीं दिए. तो लाविया पे 46 देना, 46 देना था. वो 13 भी देके वो भी आपने 33 बचाया हुआ है. So look at the actual numbers. The numbers are that they've spent 13 million since they put in the 115 million
bid in. So there's 102 million in the bank. Why is it not being spent? I don't understand. ये Like बोले I read, शायद भाई, I शायद read भाई, somewhere. Okay, had they played, sorry, Manny, just give me 1 second. Had they played their cards properly, अगर 115 इनके पास था तो इतने में तो लाविया ग्वाविडा दोनों आ जाते. देखो पता है मानस, एक आर्गुमेंट है कि एंड सम पीपल हैव सीन इट, सम लिवरपूल फैंस यूज इट, सम नॉन लिवरपूल फैंस यूज इट, और मानस तेरा तेरा मैं ओपिनियन लूंगा इसके ऊपर कि आपको ऑक्सलेट चेम्बरलेन और नाबी केटा को रिप्लेस ही नहीं करना था क्योंकि वो खेलते ही नहीं थे. बट दैट्स अ लाफेबल आर्गुमेंट, बिकॉज यार वो नहीं खेलते थे इसलिए तो वो हालत हुई ना हमारी कि स्क्वाड इतना थिन था. मतलब आपको आपको उनका रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, ये तो मतलब आई फाइंड दिस आर्गुमेंट एक्सट्रीमली लाफेबल कि यार वो जो प्लेयर हैं आपके, ऑक्सलेट चेम्बर हो गया, नाबी केटा हो गया, आर्थर मेलो हो गया, आर्थर तो चलो लोन पे, बट ये जो प्लेयर्स थे जो इंजर्ड रहते थे, खेलते नहीं थे, व्हाई इज योर स्क्वाड थिन? बिकॉज यू हैव प्लेयर्स हु आर नॉट एबल टू प्ले, तो उनको तो आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा ना. और एंड वो तो हमने नहीं किया, वो तो हमने नहीं किया. हमने जो खेलते थे उनको उनको भी बेच के उनको भी रिप्लेस नहीं किया. Yeah. देख, इफ यू गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ शाहिद भाई के आंसर को काउंटर करना चाहता हूँ इधर. देखो, हमको पता है कि द फॉल्ट कहाँ है, वो है एफएसजी, वो पता है. मतलब वो दैट इज गिवन, वो तो मतलब आर्ग्यू करने वाली बात भी नहीं है. बट ओवर द लास्ट 2 years, जैसे अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की है, देखो हमारे ओनर ने एक फ्रेमवर्क बनाया, और हमारे ओनर, अभी आपको पसंद है नहीं पसंद है, चाबी योर्गन क्लॉप को दे दी है. या देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए फैक्ट्री की, वो डिबेटेबल है, बट क्लॉप को चाबी दे दी है. दिस इज द ट्रूथ. आर ओनर्स, द बक स्टॉप्स विद आर ओनर्स. ये है वो है, हम इधर बात कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान में, बट चाबी जर्मन के पास है लिवरपूल में. ये हमें समझ के चलना पड़ेगा. अभी आप बोल रहे हो 100 मिलियन बाकी है इन द बैंक. ओके, जॉन हेनरी को 1% का फर्क नहीं पड़ता हम काइसेडो साइन करें, लाविया साइन करें, या एंडो जैसे 6 प्लेयर साइन करें वो पैसे में. जॉन हेनरी को पता ही नहीं कौन क्या है. जॉन हेनरी तेरे और मुझसे कम आता है निधि एनफील्ड में. ये रियलिटी है. राइट. और हम मिडिल क्लास लोग हैं, मुंबई में और बैंगलोर में रहते हैं. हम उससे ज्यादा जाते हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है. ही डज नॉट केयर हु साइंस. ही हैज नाउ गिवन द मनी भाई. नाउ आई फील ये जो 100 मिलियन है, ये हमारे पे है खर्चा करना. अगेन आई एम कमिंग टू अ पॉइंट कि आई नो एफएसजी का ओवर द इयर्स वी हैव बीन लेट डाउन अगेन, बट ये जो अभी विंडो बाकी है 7-8 दिन का, अगर अभी हम पैसा, वी डोंट गेट अ प्लेयर्स, मैं थक गया हूं एफएसजी को ब्लेम करके. नाउ आई विल लुक इंटरनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. When it comes to the contracts that you're talking about, we are a sell to buy club, right? ये हमने establish कर दिया है. How on earth we have been in a position over the last 3-4 seasons, आपका ओरिगी, आपका जीनी बनाल्डम, आपका एडम ललाना, ये विंडो 4 प्लेयर फ्री में जा रहा है. अगर आपको खिलाना नहीं है, अगर वो इंजरी प्रोन है, यू नीड समवन टू से ओके भाई बेच दो इनको, या रखो, या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो. आप लास्ट 3 महीने में जेम्स मिलर को बोल रहे हो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करे उसको, और फिर हमारे ओनर्स ने बोल दिया चले जाओ. वो भी कोहेसिवनेस नहीं है. देन अभी अभी देयर वर टॉक्स ऑफ गिविंग नाविगेटर न्यू डील. हाउ, व्हाई आर वी रीचिंग इनटू द लास्ट 3-4 months ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड थिंकिंग इनको देना चाहिए कि नहीं. वी वेंट फ्रॉम सच अ वेल रन क्लब टू बीइंग इन दिस पोजीशन. वहां हम लोग पार्ट टाइम रोल दे रहे हैं एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल को जो रिटायर हो चुका था. और ये मैं तो चाबी वही तो किसको दी है, ये तो मैं चाबी वही किसको बोल रहा हूँ. अप्लाई अपॉइंट करने, योर्गन क्लॉप को दी थी ना. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू से कि सैक क्लॉप दिस दैट, नो ब्रो प्लीज. आई लव योर्गन क्लॉप, आई लव दिस फुटबॉल क्लब, बट क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड. हमारे इर्द गिर्द भी क्या हो रहा है. चाबी दे Can दी, can अभी वी हैव टू यूटिलाइज. can I? यस आई. Okay, let's stay relevant to Caicedo. Okay, let's stick to this. Okay, because this is the main thing right now. We need a midfielder now. We need a central defender now. So I said we have 100 million, but let me give you an example. Let's say that your wife wants some diamonds. Okay? And you tell her, okay, I'm going to buy you these diamonds today. And you tell her, I'm taking the checkbook with me. And you take her to a jeweler where you know that he has gold and he has silver, but you know अंदर से तुम्हें पता है उसके पास diamonds हैं ही नहीं.
तो तुम उधर जाते हो, तुम बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा करते हो, ओ यार डायमंड्स नहीं तुम्हारे पास, मैं तो आज पैसे लेके आया था डायमंड्स लेने के लिए, एंड देन यू सिट बैक इन द कार एंड यू टेल योर वाइफ, देखो मेरी नीयत तो साफ थी हनी, मैं तो आज नियत इरादा बना के आया था डायमंड्स लेने के लिए, उसके पास थे ही नहीं तो मैं क्या करूं, एंड यू गो होम एंड यू पुट द मनी बैक इन द ब्लडी सेफ. This is what happened with Caicedo, sir. ये fake bid है, fake bid है. ये कोई लेने का इरादा नहीं था, इनको अच्छी तरह पता था कि इन्होंने ना करनी है. ये कोई पैसे पूसे नहीं निकालते, और ये क्लब को इन्होंने बर्बाद कर दिया, इसको नंगा कर दिया. वहां पे वर्जिल वैन डाइक हर सीजन के ट्रांसफर विंडो के दरमियान में टीवी के सामने आता है, कहता है वी नीड प्लेयर्स. इससे ज्यादा क्या ऑब्वियस बात है. Didn't you see the statement Klopp said after the Chelsea match that Chelsea managers get the players that they want? That was not directed at Chelsea, at Todd Bowley being a pagal, crazy spender. That was directed at John Henry. If they get the players that, well, देखो हमें अंदर की बात नहीं पता. ओके, एक मैनेजर दुनिया का बेस्ट मैनेजर है, ठीक है, उसको जर्मन टीम मिलते कर रही है, उसको रियल मैड्रिड मिलते कर रही है. ही इज द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड. Why would he not want good players? He's the guy who created Lewandowski's career, Marco Reus's career, Matt Hummel's career, that Japanese player who went to Man United. So Kagawa's player career, कितने प्लेयर इसने अपने हाथों से बनाया, माने, साला, ये क्या थे जर्गन क्लॉप के पास आने से पहले. You're telling me जर्गन क्लॉप को फुटबॉल नहीं आती, उसको टीम बनानी नहीं आती, उसको प्लेयर खरीदने नहीं आते. मैं बताता हूँ किसको नहीं आता, FSG को नहीं आता, जिसकी पिट्सबर्ग पेंगुइन 16 सालों के बाद they missed the playoffs for the first time. Okay, 5 out of 6 years the Red Sox have missed the playoff. It's impossible to miss the playoffs if you're a good team in the in American sports. 8-10 टीमें playoff में जा रही होती हैं. They have the history of not spending money. They're the ones who let Mookie Betts go in his prime to the LA Dodgers, to Todd Bowley. Okay, and इसकी Todd Bowley से लगती है ये आया क्या करने आया, पैसे दिए इसने. Player, did he go back to Boston after buying the player? No, he got there and he was out after 2 days. इसका काम था बैठ के कहता कि मेरी बात सुनो तुम, मैं बॉस्टन जा ही नहीं रहा वापस, मुझे प्लेयर एंफील्ड के अंदर चाहिए, 3 प्लेयर चाहिए, मैं ये 100 मिलियन खर्च करके आज जाऊंगा. ठीक है, come on guys, Jurgen Klopp is, my opinion, completely blameless, 100%. Gakpo क्यों लिया? Gakpo की जरूरत नहीं थी, right? Gakpo क्यों लिया, right? Why did you buy Gakpo? हम सब सर पकड़ के बैठे हैं. Gakpo क्यों लिया? Great player. Look at this. Great player. Okay? Gakpo. Great player. Why did you buy him? मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि जब एक बंदे के घर में रोटियां बन रही हैं और उसको मुर्गी चाहिए, लेकिन उसको पता है कि मुर्गी आनी नहीं है और उसको अब कल उसको कैलोरीज चाहिए, तो वो कहते हैं यार मुझे और रोटी दे दो, कुछ दे दो, कोई तो मुझे कोई सस्टेनेंस दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा भूखा. और को प्लेयर, इनको तो यार को प्लेयर आता है, ये तो it's like a gift from God. They'll take anything. And you know what? They know the weak point of FSG. FSG can never say no to a good deal. Okay? जो असल चीप आदमी होता है ना, वो गुड डील को ना नहीं कर सकता, वो उसको उसकी जरूरत हो या ना हो, वो Gakpo is a good deal. ये ना honestly देखो about Gakpo ना, मैंने ये चीज पहले भी बोली है कि लोग बोलते Gakpo नहीं खरीदना चाहिए था, कोई मिडफील्डर लेके आना चाहिए था. नहीं, हमको Gakpo और एक मिडफील्डर चाहिए था. यस राइट. बॉबी को जाने दे दो, तो बॉबी की जगह कौन खेलेगा? ये मैं बहुत शुरू से बोल रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट की केटा को रिप्लेस करने की क्या जरूरत है, चेम्बरलेन को रिप्लेस करने की क्या जरूरत है, Gakpo क्यों खरीदा, Gakpo के जगह मिडफील्ड, ये आर्ग्यूमेंट्स आई डोंट अंडरस्टैंड इट. आई थिंक Gakpo के साथ एक मिडफील्डर और लाना चाहिए था. लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा शाहिद भाई, आई पर्सनली फील Klopp is a little guilty of placing faith in ओल्ड हॉर्सेस. वो मैं मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो रूथलेसनेस उसके अंदर थोड़ा कम है, because you know he kept on trusting a few players that I think should have been moved on. Why do you love Liverpool? Why do you love Klopp? Like, why do you love Liverpool more than you loved it before? I'll tell you why. I've always loved Liverpool since Paisley, but I love Liverpool a little bit more with Klopp.
You know why? Because I actually feel like I'm part of a family. Really. I actually, in the last 5 years, I even felt closer to it. I said, you know what? I could not believe I could love Liverpool more. I couldn't believe it. I was obsessed with Kenny Dalglish growing up. Okay? After my father, he's the number one hero in my life. But Klopp made me feel like I was loved. He made me feel when my parents passed away. Watching Jurgen Klopp, watching Liverpool gave me happiness. Now you try to tell me, okay, you build something on love and loyalty, and then you have to take the good with the bad. Sometimes you're over loyal. You're not ruthless. And that's a weak point. And एक तो सीजन आपको कुर्बान करने पड़ते हैं अपनी टीम को रिसाइकल करने में, क्योंकि आपसे वो डिवोर्स नहीं किया जाता. लेकिन we also took the service from these players as well for 5 years. एक साल अगर हमें यूरोपा खेलना भी पड़ जाए, तो मैं खेलने के लिए तैयार हूं, जो मुझे पिछले 3-4 साल इन प्लेयरों ने दिए हैं. मैं कह रहा हूं कि देखो मेरी बात सुनो. What about the here and now? ओके देखो साक्षात यहाँ पे 3 लोग जो बैठे हैं ना, सो आई एम 35 प्लस, आई एम 36 37, मानस इज 32 एंड शाहिद भाई इज इवन ओल्डर देन. हमने ना 49. ठीक है, हमने ना बहुत बुरा टाइम देखा है. हमको पता नहीं है कि आप कौन सा क्लब सपोर्ट करते हो, एक बार लिख दो. ठीक है, वी लव लिवरपूल बिकॉज वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइव्स टू इट. ठीक है, ये जो आप लोग को लगता है ना कि हम लोग 2017 के बाद लिवरपूल फैन बन गए, हम यार देखो 1998 से मैं फैन हूं. ठीक है, शाहिद भाई he is talking about the times where you were not even born. I've been a fan of Liverpool since 1980. ठीक है, तो प्लीज ये ना पॉकेट में रखो. ठीक है, because we started winning. ये ना it applies to a particular set of fans. Us 3 are not part of it. ये पॉकेट में रखो ये एटीट्यूड. Not important, boys. I'm just right. Vivek or super chat, Raju, cheers, bhai. Nidhi bhai, can you take Banucci as backup? No, bhai. Absolutely not. I think बेचारा half time तक he will be like कि मैं किधर आ गया हूँ. I have a question for the both of you. ठीक है? Yeah. Who do you want? Look, let's try to be positive. Okay? पैसे conceptually पैसे पड़े हुए. Who do you want? In what sense? I didn't understand that question. Midfielder, defender. What's your wish list in the next 7 days? और DM देखो ना, मेरी बेटी क्रिस्टल निकालती है और कहती है मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ हेंडो वाज हर फेवरेट प्लेयर, हेंडो की हैट्रिक. मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि तुम मुझे रोम लेके जा रहे हो. तो लेट्स मैनिफेस्ट इट. ठीक है, लेट्स मैनिफेस्ट इट. बोलो, व्हाट डू यू वांट? मतलब आप रियलिस्टिक बोल रहे हो कि आप मतलब बोल रहे हो कि कोई दोनों देखो, शायद by left sided center back I would go for एक लेफ्ट साइड सेंटर बैक एंड डीएम. अपना सारे तो बिग गए. नहीं, लेफ्ट साइड सेंटर बैक वो इंटर का how can I forget Bastoni, absolutely amazing. No, I'm just putting out names. I'm putting out news. मैनिफेस्टेशन में तो अच्छा बड़ा सोचे हम लोग. और एंड डीएम तो अभी मेरे को कुछ पता नहीं. चेक डेकोरे ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं कितना अच्छा है, मैंने ज्यादा देखा नहीं उसको. ऑनेस्टली मैं सच बोल रहा हूं. सो आई डोंट वांट टू जंप ऑन द बैंडवैगन, बट वी नीड a ready DM who has to start when he is ready. Like ऐसे नहीं उसको 3 हफ्ते दे, अगर वो साइन किया मेडिकल हो गया बूम तो घुस जा भाई. change our team. So we need those 2 players right now, and if you take players of a ready high caliber right now, it costs 50 million bare minimum abhi. So I think we have the money. I think we can do it. Whether we'll do it, I'm not too very confident. But I think a left side centre back, Bastoni nahi hoga because A, Inter will not let him go. B, I don't think he would want to leave Inter. DM मेरे को पता नहीं एंड्रे होगा या अभी. I think the most realistic option in the market right now is Andre. Check January. उसकी तो January की बात है. January. और अभी क्या हो गया ना शायद भाई, now it's too late to deal with big clubs. नहीं, we need players. But the point is, they have to find a replacement, na? Palace will have to find a replacement to check decore. Good point, Manny. Good point. The point is that आप हम लोग तो मैंने सिर्फ मौके पे लिवरपूल के बारे में सोच रहे हैं.
हाँ आपने that's a very relevant point. बाढ़ में जाओ यार, हम किसको लाएंगे? So it That's is why too they want late. the premium. Yeah, That's why but they it want is the too late premium. now. It's too late now to make a marquee DM signing. अगर ये एंडो की साइनिंग would have been in June, we would be like, oh, what a smart piece of business. Now it feels like, मैं आपको बताऊं क्या है ये हमारा आर्थर 2.0 हो सकता है. Not saying he's like Arthur. नहीं अच्छा player. He's a मैंने good सुनो player. तो, no, I know he's a good player. I've covered him. But मेरा point क्या है ना, क्या बोलेंगे अगर कुछ नहीं हुआ ना, अरे ये तो लाया ना, हाँ एड्रेस तो किया ना, मैंने कहा है ना, पागल बनाते हैं हमें यार, पागल बनाते वही हैं, हमसे ये पैसे ले वही है जा रहे कि हैं. वी वेंट नहीं हो पाया. अरे क्या बोल रहे हो यार, ये लाए तो है हम लोग स्टुटगार्ट के कैप्टन को. And if you look at the whole मतलब I don't know उसका exact हिंदी word क्या है. आप ये पूरा नाटक देखो ना शाहिद भाई. I mean, if you take the charade around it, Endo is good enough. He'll surprise a lot of players. मतलब वो जो PR build up होते जा रहा है ना उसके बारे में कि, and again nothing wrong with Wataru Endo. I like the player, but वो जो build up हो रहा है ना, it is all getting set up for कि अरे भाई we tried but we could not get anybody. Can I say selling Fabinho was a bloody brilliant move, and selling Hendo was a brilliant move? This is a gift from God. Not buying a replacement is the disastrous mistake. वरना तो तुम 40 million किसने देना है यार इनके लिए? आपने सारा जूस निकाल दिया इन प्लेयरों में से, कुछ रह ही नहीं गया इनमें यार. Come on, you're very lucky you got this money for them, but you didn't, not spending it. शायद भाई that is fine, but the point is आप पहले खरीदो फिर बेचो ना. आप लिवरपूल और सर महीना हो गया उनको बेचा हुआ है यार, क्या हो गया? अब देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सऊदीज को भी ट्रस्ट नहीं किया. Whoever thinks that Saudis aren't going to pay up, come on, they wasted a week doing that. ये पैसे नहीं आने, पहले पैसे आएंगे, टीटी लगेगी बैंक में, पैसे लोड होंगे, फिर हम जाके प्लेयर ढूंढेंगे. ओ क्या हो गया भाई, उन्होंने कह दिया हम पैसे दे रहे हैं, पूरी दुनिया को पैसे दे रहे हैं वो पागलों की तरह. तुम जल्दी पकड़ो फबीनियो को, बेचो और अगले प्लेयर खरीदने शुरू करो. उनको भी कहो हम एक हफ्ते के बाद पैसे दे रहे हैं, डील डाल. They so badly managed, it's unbelievable यार. जो इन्होंने लाविया के साथ किया, मुझे ऊपर से नीचे जो चल रहा है वो एक फिलहाल it's a disaster actually. It has gone from, अभी आप, मैं निधि को कल बता रहा था शायद भाई, अभी सोलांकी अपेरेंटली वेस्ट हैम जा रहा है, उसका मैं 8 मिलियन मिल रहा है भाई. माइकल एडवर्ड्स वाज अ गॉड्स गिफ्ट टू अस भाई. उसने रियान ब्रूस्टर को 28 मिलियन में बेचा. उसने वो लेफ्ट बैक ब्रैड स्मिथ को 12 मिलियन बोर्नमाउथ को बेचा. कैन यू इमेजिन द डील्स दैट ही डिड? Now we are and what about that goalkeeper who went to Leicester? उसको भी 12 मिलियन में बेचा था. 25 मिलियन Danny Ward. हाँ वो तो इतना बड़ा फ्लॉप हुआ उधर जाके, वो रेलेगेट करा दिया उनको. Speaking of Saudi, आप देखो फिलहाल वार्ड लगी हुई है. Nidhi, who do you want? Realistically speaking, I think Doucouré is a player that मतलब सूट भी करेगा और अच्छा रहेगा. And center back में Bella Kochap from Southampton is a player that I really like. I think वो develop भी अच्छा कर सकता है और थोड़ा versatile सा भी है. So these are the two players that I would personally go for at this point. हालांकि मुझे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है ये बोर्ड के ऊपर, और जिस तरह से इन लोग ने ये इट्स अ शैम मतलब जिस तरह से इट्स मतलब मिसमैनेजमेंट. Guys, let's talk about the team now. For example, like I शायद भाई the thing is ना, स्टार्टअप के कॉलेज रिक्रूटमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, those are better managed. I swear, right now. आपको पता है कि आपका फोर्थ सेंटर बैक कितना इंपॉर्टेंट है? आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई मैच नहीं जीत सकोगे. जो डिफेंसिव मिडफील्डर है ना आपका, वो अगर एंडो चल गया, या अगर थियागो फिट रहा, या अगर बेचटक चल गया, तो कुछ चांस है कि वो पोजीशन कवर हो जाए. देखो मैं पागल हो जाऊंगा अगर इन्होंने बंदा ना खरीदा. लेकिन डू यू इवन नो कि एनी टाइम अ टीम गेट्स द बॉल, they dump it over into your right back column every single time. Your right back is attacking, कभी वो inverted होता है, कभी वो वैसे ही outer position होता है. ठीक है, आपने basically पूरी strategy ये बनाई हुई है कि कोनाटे जाएगा
और वहां पे उसको कवर करेगा। आप हाइलाइट्स देख लें, चेल्सी मैच के हाइलाइट्स देख लें, बॉर्नमथ मैच के, कोनाटे की जॉब, प्राइमरी जॉब ये है कि उसने ट्रेंड को कवर करना है। सेंटर बैक डिफेंस बाद में करना होता है उसने। अच्छा, अगर कोनाटे इंजर हो जाता है, टेल मी हु, Matip can't do it, and they think Joe Gomez can do it. Joe Gomez cannot do it. Okay, ये दोनों उस पोजीशन को कवर नहीं कर सकते। ये जो गोमेज एक्चुअली इनको चुप करके उसको राइट बैक बना देना चाहिए, एंड माटिप को रिप्लेस करना चाहिए वैन डाइक को लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में, और राइट सेंटर बैक एक प्रॉपर चाहिए आपको जो कि आपको कवर करे उस पोजीशन को। एक्चुअली जब कोनाटे इंजर हो, दिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। व्हाई? बिकॉज दैट इज द रूट फॉर एवरीबॉडी टू स्कोर गोल्स अगेंस्ट यू। जिसको गोल चाहिए वो ऑली वॉटकिंस को गेंद फेंक तो वो भाग जाएगा वहां पे, बुएनो को गेंद फेंक तो वो भाग जाएगा वहां पे। जिसको they just grab one fast striker and they just throw him into that channel and they just feed the ball down that channel. Even Calvert-Lewin, कोई प्लेयर भी होता है ना, कोई भी तेज स्ट्राइक, उसको वो कहते हैं वहां से जाके गेंद ले, उधर कट कर, ये है वो कर, और गोल बैक पोस्ट पे आके कर ले। उसको कवर करने के लिए जब तक तू कोनाटे खेल रहा है, you're going to win a lot of matches. Okay, but right now look at what happened to Billy Curtis Jones. बैठे बैठे 3 मैच की इंजरी, बैठे बैठे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो गेम का हिस्सा है। जब आप कहते हैं ना केटा को इंजर रिप्लेस करना है और ऑक्स को करना है, यार इंजरीज आर मेजर पार्ट ऑफ गेम। अच्छा, उसके बाद you're now saying कि ओके हमारी प्लेटून में हम एलियट को भी डालेंगे, कुजो को भी डालेंगे, बेचेटिक को भी डालेंगे, डोक को भी डालेंगे। ये प्लेटून है आपकी, 22 प्लेयर है ना, हर पोजीशन में आपको 2 प्लेयर चाहिए। मुझे ये बता दो फिर यूरोपा कौन खेलेगा? नहीं, यूरोपा कौन खेलेगा? मैं शुरू से बोल रहा हूँ, यूरोपा हम compete कर ही नहीं सकते। हमारे पास इट्स नॉट अबाउट अ क्वेश्चन, डेप्थ ही नहीं है, नंबर्स ही नहीं है, सीरियसली ले नहीं ले। मैं मतलब ऑब्वियसली अगर हम जीते तो इट्स अ ट्रॉफी, ठीक है, इट्स नॉट दैट रिस्पेक्टेबल, बट ठीक है ट्रॉफी है, मगर हम लोग कर ही नहीं सकते, वी डोंट हैव द डेप्थ। यार आपको अगर खेलना, लेकिन मैं बताता हूँ निधि क्या होता है, यंगस्टर्स को यूरोपा के जो पहले 2 राउंड्स होते हैं ना, they're shit. Literally, your under 21 team can win them. When you get to the quarter final, आपकी नीयत खराब हो जाती है। आप कहते हो यार 5 मैच रह गए, चैंपियंस लीग में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है। Then you start throwing your proper team in. Do you know the only reason Arsenal lost the league? I mean, of course they lost because City are a great team and they're fast and quick. But one of the main reasons they lost the league was because they played Saliba in the Europa League and he got injured in the Europa League. That is a dereliction of duty, my friends. That is negligence. That's corporate negligence to do that. That's the type of shit we're going to do this year. देखो, and we have, हमने चैंपियंस लीग में करा है शायद भाई, फॉर दैट एक्स्ट्रा लिटिल 1 million 4 million मिचेटलैंड के साथ जो हमने डॉटा को खिला दिया था, वो पूरा सीजन बाहर हो गया। आप अगर आप एक चीज देखो, अभी 2019-20 जब हम लीग जीते, हमने लॉवरे को रिप्लेस नहीं किया, वी वेंट विद 3 सेंटर बैक्स इन द सीजन, अगर आपको याद है। फिर उसके नेक्स्ट सीजन हमने जीनी वाइनाल्डम को रिप्लेस नहीं किया व्हेन ही लेफ्ट द क्लब। फिर उसके बाद हमने मिडफील्ड एड्रेस करने के लिए आर्थर ऑन लोन लाया। द पॉइंट इज, लास्ट 3 विंडोज व्हेन शिट हिट्स द फैन, जब एक डिसाइसिव चीज करनी होती है, हम नहीं करते, हमारे ओनर्स बैक नहीं करते। And Manas, the other thing is Thiago को आप इंजर कर देते हो। Why do you think इसको इंजरी प्रोन बना दिया? हाँ, वो पहले भी इंजरी प्रोन था, लेकिन आप उसको बार-बार खिलाते हो क्योंकि आपने अच्छा, बर्नार्डो सिल्वा क्यों नहीं इंजर होता? क्योंकि उनके पास इतने प्लेयर होते हैं कि वो उनको रेस्ट करते हैं। आप बार-बार उसी प्लेयर को फेंकते हैं। आपने फबिनियो को जाया कर दिया इस चक्कर में। सेंटर बैक खिलाना शुरू कर दिया उसको। यार देखो तो सही कर क्या रहे हो? अच्छा, the frustrating thing is you're so close. Honestly, because you know what? You had the best team in the world pretty much for like 1 year, okay? And the second best or equal best for like 3 years. This is a true fact. So now you're 5th, 6th best team in England. So you still have a lot of bullets in the gun. अभी भी बड़े player हैं आपके पास, अभी भी बड़ा manager आपके पास, अभी भी बड़ी stadium है आपके पास. You can turn this around and you can become super good if you just buy 2 or 3 players, because you still have players in their prime. Trent, like Robbo's still, the goalkeeper is the best goalkeeper in the world, yaar. What are you talking about? You know, Nunes to bhi chala bhi nahi. Luis Diaz to
इतने अच्छे प्लेयर हैं आपके पास, क्योंकि आपकी टीम इतनी अच्छी थी, आपने उसको निगलेक्ट किया, थोड़ी वर्स होगी, थोड़ा आपने दोबारा उस पर शुगर फेंकना, एकदम आपकी टीम ऊपर चली जाएगी. एकदम That's सही बात what's बोली most frustrating. भाई पर एग्जैक्टली वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश अ बिट हियर एंड देयर. अभी आप देखो 2018 ने 18 चैंपियंस लीग फाइनल जो हम लोग हारे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. रियल मैड्रिड की टीम क्या थी? केलर नवास, लेफ्ट में मार्सेलो, राइट में कार्वाहाल, आपका रामोस, वरान, फिर उसके मिडफील्ड चलो थे, फिर उसके बाद रोनाल्डो, बेल एंड बेंजेमा. सर मिडफील्ड भी सारी चेंज हो गई है. कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, वेलवर्डे, ये सारे प्लेयर उस वक्त नहीं थे. It was Kroos, Modric and Casemiro. 5 years later, when we lost to Real Madrid in the Champions League final again, new goalkeeper, new left back, Everything. new center back, midfield में आपका कामाविंगा was available, आगे Rodrigo और Vinicius. वो एक सीजन भाई, जैसे आपने बोला ना, they just add one player. That is what we need. We need to keep on. That's what we used to do in the 80s. We also used to add 1 or 2 players every year just to keep everybody on their toes. Look, definitely you went from first to fifth, okay, or second to fifth. Obviously, the manager also made mistakes. Obviously, yeah, I was a human being. लेकिन आपके FSG ने तो ये कह दिया कि भाई मैनेजर से हम 100% ऑप्टिमम KPI परफॉर्मेंस चाहते हैं. क्या हो गया भाई? अगर वो 7 सालों के बाद उसकी 7-year हिच होती थी ना, 7 सालों के बाद उसने अगर कोई ह्यूमन एरर कर भी दिए डिसीजन मेकिंग में, आपका काम है कि इस समय में उसको कहना we're behind you, Klopp, we're going to back you all the way, let's go for the next 7 years. Okay? When you have to recycle the team again, we'll worry after 7 years. ये 3 साल तो हम let's enjoy it, let's go for the glory. वो आपकी गलती है, because आपको लग रहा है कि वो इतना केयर करता है. हाँ. जो नहीं करते. और मैं आपको एक बात बताऊं, वो क्यों आए थे वो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे? लकी नहीं, वो स्टैंड का जो ड्रामा हुआ, पता चल गया था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में चली गई कंपनी, स्टैंड रुक गया, चलो मैच भी देख लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैज टू बी डन नेक्स्ट. कुछ नहीं काइसेडो, कुछ नहीं प्लेयर साइनिंग. उनका था आपने कहा वो क्यों आए थे, मैं बताता हूँ क्यों आए थे. क्योंकि जिलेट और हिक्स ने किया हुआ था फ्रॉड, और वो ब्रॉटन ने एन एयर ने मिलके उनके 3 वोट हो गए, इनके 2 वोट हो गए, एंड एज पर यूजुअल they saw a good deal and they jumped at it. Okay, 225 या 275 मिलियन में लिवरपूल इनको तो मैं पीछे जा मुफ्ते में मिला हुआ है क्लब उनको, मुफ्ते में बॉयज. 275 million में they basically were able to buy a distress sale. Okay, distress sale, and now they want 30 times, 25 times for that. Okay, and the first 5 years of their stewardship, it was a mess on the pitch. Okay, mind you, King Kenny, Roy Hodgson, Brendan Rodgers, nothing to show. क्या जीते तो कुछ नहीं ना, बातें ये इनकी भाई. वो अब भी आए थे, वो आते भी नहीं, क्योंकि उनको पता चला कि भाई हमने जो 200 मिलियन लगाया स्टैंड में, वो इट कुड गो डाउन द ड्रेन. तो आके भाई लेट्स फाइनलाइज कौन से नई कंपनी को लाना है ताकि वो सीट लगा दे भाई. मतलब आपको दिख रहा है कि आधा रेड है और आधा कंक्रीट आपको दिख रहा है. सो इट डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन देयर एसेट, शायद से इसलिए वो इधर है. सो या एक क्वेश्चन है आदित्य का, whose window has been worse, United or Liverpool? भाई यार United. I mean, but if you think about it, United के क्या इश्यूज थे? गोलकीपर कवर कर लिया, ठीक है? नहीं, not good enough. अरे बट ठीक है शाहिद भाई, चलो प्लेयर तो लाए ना. यूनाइटेड का इशू था डिफेंसिव मिडफील्डर, चलो वो उसका कवर था, वो अभी तक नहीं लेके आ पाए हैं. नंबर 8 लेके आए. स्ट्राइकर, यू गॉट एन 80 million स्ट्राइकर, राइट? पोटेंशियल तो है ना, अब अच्छा है कि नहीं है. हमने प्लेयर जो 2 खरीदे हैं ना, हमने बहुत अच्छे प्लेयर खरीदे, मैकलिस्टर और सबोत्सलाई, राइट? वो 2 प्लेयर्स हमने बहुत अच्छे खरीदे, बट हमने इश्यूज अपने एड्रेस नहीं किए. United, I think have addressed more issues. I think United have addressed more issues. I think Liverpool's window is better, even now. I think because Liverpool's manager will get the players to play better in the after 6 months. Liverpool's window will look better than United's. That's my opinion. But United's not your competition. Your competition is Manchester City and Arsenal now. Like the thing is, look,
Well, I'll tell you what I don't like about these owners. They have in United's and even Liverpool's. They have for long time Arsenal's. They have a conscious strategy of dumbing down expectations. ये कहते हैं कि इनको basically they don't like first place. First place में तो बड़े bonuses देने पड़ते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं, you know. तो ये they like second place, they like third place. ना बोनस देना पड़ता है लीग टाइटल विन करने का और चैंपियंस लीग के पैसे भी साथ मिल जाते हैं. ये स्वीट स्पॉट है इनके लिए. फर्स्ट प्लेस तो ये पसंद ही नहीं करते. तो इन्होंने अब देखो हम क्या, what would we be happy with? You will, if we come third, you actually will be like, यार अच्छा सीजन गुजरा है यार, थर्ड आ गए चैंपियंस लीग, हम यूरोपा लीग के थर्सडे नाइट से तो निकले, वापस चैंपियंस लीग में आ गए, very happy. But you know what? Is that really the expectation that we deserve with this manager, with this team, with this club? We should with the progress that we had made in the last 7 years, we should be fighting for the title, guys. We should be fighting for the title. Shahid Bhai, some comments for you. Saga is saying for Shahid Bhai, peace was never an option against FSG. Ishal is saying that Shahid Bhai spitting facts. We've got another एक ऊपर एक बहुत सही comment था शाहिद भाई के लिए, which Shahid Bhai is great. Yes, we all love Shahid Bhai. Shahid Bhai is someone we really look up to. I want to say I respect FSG for what they've done in the stadium. It's fantastic. Okay, but you know what? They frustrate so much, right? When the time is there, you have, like, if you own a sports franchise, you have to have an element of glory in it. You have to have an element of vanity, an element of a pet project. You can't continue run it like a pure business again and again and again. You know, you can't do that, especially for Saudi Arabia ने तो इनको तबाह कर दिया है. Look, the bottom line is the stadium is beautiful. This little hiccup that's happened, it's kind of bad luck or maybe bad management, what have you. But they made a lot of mistakes in the last 2-3 years. Getting rid of Peter Morse or sending him, or like, I don't want to use that type of words, but like letting him go was a huge mistake. Why would you do that? Why'd you let Peter Morse go? Explain that one to me. You know, he was a CEO. He was doing everything was running well underneath him. Go ahead, Nidhi. No, speaking of Saudi, Manas, Gabri Viega, 21-year-old player moving to Saudi. What do you think? Yeah, if I get that sort of money, even I would go. Arey Baba, but it's the question is not about us now. It is about money, no? Nate, why do these players come to the Premier League? Money. Money as well. Money, glory. Money. No, not glory. Maybe Declan Rice or Steven Gerrard or Frank Lampard or Ramsdale will enjoy playing in the Premier League for the glory. Maybe a few Scottish players might even play in the Premier League for glory. But if you're coming from Brazil, what glory do you want in the Premier League? You're there for corn. You're there for money. Like मैंने Alisson की performance देखी. Alisson जितना अच्छा बंदा जो अब दूर से हमें नजर आता है, बड़ा अच्छा बंदा है. You know, he's a clean guy. He's a great guy. Honestly, Alisson, I look at that guy and I get the same feelings when I see Klopp. मैं Klopp को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मेरा manager है. Oh wow, Then I look at Bobby. I say, Bobby, this guy's playing for us. Oh my God, how lucky are we? I look at Alisson and I say, wow, this is the golden age for us to see that goalkeeper who is a Superman in the goal. Okay, a family man, a man who plays with his heart for us. And I'm so happy to see him as my goalkeeper. Did you see him play in the first 15 minutes on the weekend? उसका दिमाग उड़ा हुआ था. मैंने कहा इसको हो क्या है? मैं बताता हूँ क्यों. सारा हफ्ता उसको 5 लाख पाउंड हफ्ते का ऑफर हुआ था. ओके, सऊदी अरेबिया से. उसका दिमाग खराब हुआ था. उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है. मैंने कहा इसके तो जड़ों में सऊदी अरेबिया घुस गया भाई. इसको जगाओ. Listen, these guys are not even there mentally right now. Some of the money that's being thrown at them, it's generational wealth for them. Do you know कि मैंने सुना है कि ये कोई प्लेयरों को तो 50% एडवांस भी दे रहे हैं. Do you understand? पूरा कॉन्ट्रैक्ट का 50% upfront. कि अगर तुम इंजर भी होगे, तुम भाग भी जाओगे, कोई बात नहीं. इसलिए तो भागे जा रहे. Big problem for the Premier League, boys. It's a big problem for every league in the world, Nidhi.
आई थिंक गैब्री वेगा 21 साल का हाईली रेटेड सेल्टा विगो ना, सेल्टा विगो से आई थिंक अभी राफा वहां मैनेजर बना है. आई भाई एम नॉट उसको सरप्राइज. उसका उसका फेब्रिजियो रोमानो ने, मतलब खैर रोमानो तो मतलब मेरे जो थॉट्स हैं उसके ऊपर वो तो अलग ही बात है, लेकिन फेब्रिजियो रोमानो ने ह्योविगो वगैरह कर दिया था नापोली का. आई नो, आई नो. उसका दीदी द उसका पॉइंट, दीदी द अग्री पॉइंट हो इज गया था. सेल्टा विगो को फीस ज्यादा मिला, सिंपल सी बात. प्लेयर नापोली जाए, इटली जाए, ये सऊदी जाए, वो बोल रहा है मैं 21 साल का हूं, मैं अगर 3 साल सऊदी में खेल गया, हम्म. आई एम सेट. Yeah. मेरे फैमिली नेक्स्ट 2-3 Acha, guys, जनरेशन. you have to understand another thing. For Muslims, it's a no-brainer. It's a no-brainer. Yeah, Okay? that's why For Shahid bhai, we feel Mo Salah moving to Saudi is inevitable. it's a वो इवेंट no-brainer. हाँ You, वो you get इवेंचुअलिटी like है, नॉट अ culture, पॉसिबिलिटी. food, the holy sites, and just the whole atmosphere, and then the money as well, and then the age for a 31-year-old Muslim player. You're seeing all of them go now. So Salah, but the thing is, Salah's interested in breaking Ian Rush's record as well. So this is kind of, and he also wants to win. But the problem here is, I feel like, look, guys, you better watch out. If you don't qualify for the Champions League this year, you are going to lose Van Dijk, you're going to lose Trent, you're going to lose Allison, you're going to lose Salah, and you might even lose some other players. Maybe even like Luis Diaz. ये सारे या तो सऊदी जाएंगे या ये कहीं और चले जाएंगे. I have seen this with my own eyes, yaar. It was heartbreaking. Mascherano, Alonso, Arbeloa. It was like every time one of them left, it was like somebody cut my arm off. Then somebody took my heart. Then another guy took the other leg off. क्या यार इतनी मुश्किल से team constitute की जाती है. Players who are willing to fight blood and sweat for the team and believe in the manager and it's one unit and आप उसको तुड़वा देते हो because आप उसमें addition ही नहीं कर रहे. These are elite players, guys. You got to surround them with an elite squad. This is normal, yaar. Achha, I understand Salah missed the penalties. Virgil missed a header against Nottingham Forest. इनकी अपनी गलतियां भी बीच में थी, जिसकी वजह से हम fourth नहीं आए. लेकिन the real truth is we came fourth because we did not have a squad with the proper. We didn't come fourth because depth. We didn't have a squad with the proper depth, and we misread a very simple situation, which a lot of people in football did assess, which is after going for the quadruple with a fantastic team, which was on the end of its cycle, there was going to be a mental and physical drainage that needed to be replenished quickly. Okay? Did you see the rumors? They won Mateus Nunes. They bought Doku. And who else? There was one more player they were going for this morning. They know कि यार हमारे players treble. तीसरा player कौन था जो आज ढूंढ रहे थे? Nunes. एक और तीसरा प्लेयर भी मैंने सुना है they were putting bids in for Nunes, Doku, एक और था. They understand that we got to refresh this team because we've achieved the pinnacle and we had a long season and we need new players. Eze. Takatabi they were trying to get before the betting scandal. तो वो ये इस तरह behave करते हैं आप. हाँ मतलब ये लोग का जो ट्रांजिशन है, मतलब ये तो सीमलेस होता है जब भी ये ट्रेबल जीते उसके बाद द रीबिल्ड द रिफ्रेश उनका बेटर हुआ. निधि तू क्या बोल रहा था अबाउट गैब्री विएगा? लेकिन can I say one last thing? Yeah. One last thing. It's an important point. You do know the last time City lost the league to us in the last 6 years, the one time or 5 years they lost the league, that coincided with a KDB injury that was longer than 3 months. Do you understand that no matter how many players they buy, this is the year to beat them? No club has ever won 4 league titles in the top flight of England in 150, 70 years. It's not easy. This is the year to win the league. No one's won 4 on the trot. Arsenal 3 on the trot in the 30s with Herbert Chapman. Liverpool 3 on the trot in the 80s. Fergie 3 on the trot. No, and now City 3 on the trot. Fergie twice 3 on the trot. 4 on the trot, I don't think anybody's ever won. Okay? So the thing is, no, it's not that easy. This is the year. The Arsenal know that. उन्होंने भी सारा assess किया. उन्होंने कहा ये साल है भाई, ये खरीदो वो खरीदो, टीम recycle करो, boom, we're going to win the league now.
we are also close, guys. हमारी टीम भी अच्छी है. दो Newcastle. प्लेयर चाहिए शायद भाई, दो प्लेयर बस. चाहिए. तो दो दो I just wanted to put that in there कि मेरी बात सुनो. Sure. अगर आप 2 player ले लो ना, I'm sorry, I don't want to get too excited. लेकिन game on है. दो प्लेयर चाहिए, दो प्लेयर तो चाहिए. एंड आई थिंक बट वी वो विल कम्पीट अगर वो दो बट प्लेयर वो आ गए. दो प्लेयर बट वो दो प्लेयर एकदम रेडी वाले चाहिए. मतलब ये अगेन आई एम सेइंग आई लव एंडो, बट वो एंडो जैसे और प्लेयर भाई नहीं हो सकता. मैं तो एंड्रे भी लेने के लिए तैयार हूँ. कुछ भी दे दो मुझे, तो दरख्त भी दे दो, पुतला भी दे दो, मैं लेने के लिए तैयार. Just bring something in, यार. Yeah, Thiago will be like a new signing, na? Shahid, but he will be that fourth player of guys. More than 500 people, please like the stream. अगर आपने अभी तक stream को like नहीं किया, subscribe to Menace in the Mock. We are edging closer to 20K subscribers. Big deal for us. Big deal that so many people are watching on a Friday afternoon as well. So thank you. Thank you so much for that. Nidhi, तेरा view on Gabri Vega moving to Saudi. मेरे को 2-3 कमेंट मैंने पढ़े. कोई बोलता है कि फीफा शुड इंटरव्यू ना. बोले अच्छा, तुम्हारा क्लब करे तो सब चंगा ही सी, अगर सऊदी करने लगा तो फीफा शुड इंटरव्यू नहीं थी. नहीं, व्हाई शुड फीफा इंटरव्यू यार. देख मैं यही बोलता हूँ, ये जो हो रहा है ना, ये प्रीमियर लीग ने किया हुआ है बहुत साल. ठीक है, ये सीरिया करता था एक टाइम पे. इटालियन फुटबॉल यूज्ड टू टेक ऑल द इमर्जिंग टैलेंट एंड सुपरस्टार्स. सॉरी, ठीक है, थर्सडे, आज फ्राइडे नहीं, थर्सडे. सॉरी, वही तो बोला मैंने, थर्सडे. राइट. Italian football used to take away all the superstars. La Liga used to take away all the superstars. Right. ये हमको it's more of a thing कि यार सऊदी अरेबियन क्लब है जो यूरोपियन फुटबॉल नहीं है. ठीक है, उनकी लेगेसी तो नहीं है. मेरे को बस ये लगता है कि गैब्री विएगा unless Saudi becomes like a really established league, उनका ग्रासरूट्स पे जो काम चल रहा है वो सब होगा. उसके अलावा ठीक है, वो पैसे तो मिलेंगे, बट ग्लोरी का क्या? लाइक टू विन द चैंपियंस लीग, टू compete in those with those kind of players, चलो वो भी हो जाएगा. तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है सऊदी का फ्यूचर तो अच्छा है. ठीक है, वो लोग कर ही रहे हैं उनका. एंड बाय द वे सिर्फ प्लेयर्स पे पैसा नहीं फेंक रहे हैं. आई डिड रीडिंग अबाउट इट. तो वो ग्रास रूट्स में भी काफी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं. और सऊदी में पब्लिक है, मतलब इट्स नॉट लाइक चाइना जहां they love their league. Yeah, I met them at the World exactly. Cup in Qatar, and they were like, Exactly. listen, our league is amazing. We love watching our league. या सो ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पे डेड सिचुएशन है कि मतलब जैसे चाइना में क्या था कि चाइना में बाहर के क्लब ज्यादा फेमस है. मतलब योर इंटरनल चाइनीज लीग उन्होंने उतना नहीं. सॉरी शाहिद भाई, कंटिन्यू. Guys, for a player, sorry, I just want to throw this in. For a player, it's a win-win. So let's say you go to Saudi and the league flops after 3 years. आपने तो पहले साल जब पैसे खर्च हो रहे थे ना, मोटा पैसा खर्च हो रहा था, आपने तो कमा लिया ना, राइट? साल अगर 2 साल बाद जाता हो सकता है उस वक्त तक प्रोजेक्ट डेड हो. तो जो बंदा इस साल जा रहा है ना, they're very intelligent. They're like, देखो मेरी बात सुनो, बाद में इन्होंने स्पेंडिंग रोक लेनी है, अभी इन्होंने एक स्प्लैश करना है, अभी घुस जाओ. एक तो that's a win for them, right? For the player, you're making like life-changing money. Second thing is, there's a lot of other players they're going, so you don't look like a fool anymore. Like Brozovic भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, वो भी ठीक है भाई, नया मेला लगा हुआ है, सब जाओ. दूसरी चीज ये कि अगर लीग चल गई तो you're a unicorn. You're the explorer. You're the Vasco da Gama who went in there and established the beginning of a new league. And after 2 or 3 years, you're all going to be playing in one of the best leagues in the world. Look, जिस तरह उनका ग्राफ जा रहा है, देखो ऐसे चल रहा है उनका ग्राफ. ये तो 3 महीने के बाद they'll be the best league in the world, boys. ये तो हर रोज एक प्लेयर खरीद रहे हैं. तो after 90 days they're going to have 90 new players. Come on, they're better. They're more stars in the Saudi league right now than they are in the French league. Okay, that's a fact. One of my friends in Dubai is like, चल यार चलते हैं तो Saudi मैच देखने यार, प्लेयर इतने अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं वहाँ पे, कोई टीम सेलेक्ट करते हैं, let's go watch a game there. मैं आपको एक बात बताऊं. So मुंबई सिटी एफसी, हमारी टीम has qualified for the AFC Champions League. Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, इन 3 में से one team will visit us in the Champions League here. Can you imagine? I can see Fabinho या Ronaldo या Neymar. Can you fucking imagine? Can you imagine? In India, भाई, मेरे शहर में they might visit. Competitive match. Not a friendly, competitive match. Champions League group stage.
Champions League group stage, bhai. So Vidhi, I do understand. I do understand your point totally, bhai. बट मेरे को क्या लग रहा है ना कि ये लॉन्ग टर्म है बिकॉज दे आर बिल्डिंग फॉर द 2034 वर्ल्ड कप एंड दे आर गोइंग अबाउट इट इन अ डिफरेंट वे जो कतार ने नहीं किया, जो कुछ नहीं था कर दिया. आई थिंक ये लोग लीग बनाएंगे तब तक और फिर लेंगे और पैसे Maybe तो 2030. बट तेल खत्म नहीं होगा तब तक. तेल तो है No. और 30 40 50 100 So, साल तक. so guys, now what's our plan now? मुझे बताओ, bring it back to Liverpool, भाई. मैंने तो लिवरपूल की कमीज पहनी है. मुझे बताओ होना क्या है हमारे साथ. आप बताइए ना, आपको If क्या लगता है आंड्रे होगा? do I think that if Liverpool are going to sign players or not? I have a feeling that they're not going to. Actually, मुझे लग रहा है कि उन्होंने जनवरी तक बात डाल देनी है और उन्होंने कहना है कि बेचेटिक भी फिट है, थियागो भी फिट है, ये 3 प्लेयर तो हैं आपके पास सेंटर मिड में. उसके साथ राइट पे आपके पास एलियट और सोबोज़ला है, लेफ्ट पे आपके पास जोन्स और मैकएलिस्टर, आगे लेफ्ट विंग यू गॉट डियास एंड जोटा, सेंटर फॉरवर्ड नूनेज एंड गैक्पो, राइट विंग साला एंड डोक, राइट बैक गोमेज एंड ट्रेंट, सेंटर बैक माटिप और वो जो है आपका कोनाटे और वैन डाइक, और लेफ्ट बैक आपका सेमिकस और रॉबो, और पीछे एलिसन और केलहर. तो कौन सा बड़ा पसंद आया था मेरे बेटे को, तो कौन सा डाल देंगे बीच में एज अ फोर्थ सेंटर बैक, मुझे क्या पता. लेकिन frankly speaking, guys, if they were going to sign a player, there should be some noise. I mean, I know they like to work under the ground, लेकिन they need to start moving it. There's only like paperwork है, medical है, दूसरी टीम ने, जब मैंने you made a great point, दूसरी टीम ने प्लेयर ढूंढना है. ये क्या हो रहा है भाई, रोज सुबह उठते हैं, कोई नामो निशान नहीं है प्लेयर का, कोई सुख भी नहीं है. Every day we wake up, we hear cities rumors. हम क्यों, हमारे फोन बंद हो गए, हमारे मोबाइल टूट गए. और 22 जुलाई को 22 जुलाई को शायद भाई क्लॉप ने वो इंटरव्यू में बोला था जब वो जर्मनी में थे कि वी नीड टू साइन मोर प्लेयर्स एंड क्वालिटी प्लेयर्स बिकॉज दूसरी टीम्स भी इम्प्रूव कर रही है. और उसके बाद सिर्फ एंडो हुआ है. एंड मैं आई डोंट वांट टू मिन्स माय वर्ड्स ओवर हियर, पूरी दुनिया को पता है वो हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं था. ठीक है, Yeah, of course not. Of course not. But you know what? फोर्थ चॉइस भी बोल सकते हैं आफ्टर कैसेडो, लाविया, आंड्रे, Sir, एंडो. Decore, Klopp will make Decore work. कौन सा प्लेयर आपने क्लॉप को नहीं दिया? अब आप उसको बेन डेविस जैसा प्लेयर ले आओगे तो वो कहेगा यार ये तो now you're taking the piss, boys. Come on, I'm a good manager, but I can't turn like water into wine. Come on, what are you doing? You know, and then you or if you bring him something like Arthur Melo who's injured and like, you know, he's probably thinking to himself, what do you want me to do with this guy? You've now, ये तो तुमने मजाक बना लिया मेरे. लेकिन अगर आप उसको कोई हाफ डिसेंट प्लेयर, जापान का कैप्टन है आखिर का एंडो यार, और ये जो आपका आंड्रे है, his stats are the #1 stats in the Brazilian league right now with regard to recoveries and tackles, and he's also Brazil international. A young Brazil international. Klopp can make these players work. Decore is a very good player, but the problem now with where that's happened is this whole mess that 72 hours when they made that bid for Caicedo has been a disaster for everybody but Brighton. Okay, Chelsea ended up paying 20 million more. The price tag is not gonna let Caicedo be a success. The fact that he said no to Jurgen Klopp is going to hang over his head all the time like a फांसी का फंदा. वो प्रेशर में नहीं खेल सकेगा. खत्म हो गया Caicedo, स्टोरी मुक गई भाई. लाविया फोर्थ चॉइस, उसकी भी स्टोरी मुक गई. और लिवरपूल लाविया खरीदना, लिवरपूल की स्टोरी मुक गई. चेल्सी ने 20 मिलियन ज्यादा दे दिया. चेल्सी सिर्फ ब्राइटन ने क्या लफ्ज बोलूं, बना दिया सबको ब्लीप. ब्राइटन ने सबको ब्लीप बना दिया. ठीक है, and they ran off with the money. I will not be so sure about Caicedo being a failure, Shahid, but I think he's Sir, मैं काला जादू कर रहा हूँ, नजर लगा रहा हूँ. क्या हो गया? इतने मंत्र पा रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा. इतनी गालियां देते हैं हम उसको, जब वो टीवी पे आता है उसको गालियां की बरसात होती है उसके ऊपर. तुम कह रहे हो वो सक्सेसफुल. हम हैं ना उसको फेल करने के लिए. माउंट को किसने फेल किया? मैंने अपने मैन यूनाइटेड दोस्तों को कहा डब्बा फ्लॉप माउंट के बारे में.
पहले दिन में मैं तो इसने हमारे सामने इतने चांस मिस किए हैं, इस्तांबुल में चांस मिस किए, वेम्बली में चांस किए, अरे कुछ नहीं लगा, नहीं दे लाइक माउंट, नहीं मैंने कहा, एंड मैं हॉलैंड के बारे में मैंने क्या किया भाई, आप इंजर्ड प्लेयर जब खरीदते हो, हमने लिया ना कैरल, हमने लिया ना एक्विलानी, flop. Even this bloody Arthur Melo was injured. Flop. When you buy a थूक लगा गए इसको, मैन यूनाइटेड को हॉलैंड थूक लगा गए. I'm telling you, they made a fool of all these guys. Gonna flop, okay? And Caicedo flop. You mark my words, not gonna be able to do it. I think Shahid bhai, that's you wishing. Okay, we'll see. We'll see. नहीं मतलब that team doesn't even know what they lost to West Ham, bro. Come on, West Ham signed one player. What are you talking about? They lost. West Ham lost Declan Rice, and they signed one player, James Wood-Cross, on the pitch, and they lost to West Ham. So you're telling me that they're going to make Caicedo a success? I'm not saying Caicedo is a bad player. What I'm saying is he's going to flop at Chelsea. You watch. And as far as Liverpool is concerned, it was a disaster for us as well. हमारे लिए भी disaster था. हमारे हाथ से ला दिया, छूट गया. I really wanted him. I think he's going to be fantastic. I wanted him badly, but nobody wanted him more than me because I saw him play right back for the last 5 games of the season, and मेरे मुंह में तो पानी आ गया. मैंने कहा क्या बात है, ये तो 2 player मिल रहे हैं एक player की price की. ठीक है, I saw him play against Ecuador, Holland. I think I saw in the World Cup. He was the best player on the pitch, yeah, by far. He's a damn. So basically, Shahid bhai, you really rate the player, but you really don't want to see him do well at Chelsea. बात हुई है. हाँ, वो अलग चीज है, मगर वो प्लेयर तो अच्छा है. मैं हाँ, I think शाहिद भाई अटक गया. Yeah, I'm back. Right. Okay. कुछ सुपर चैट्स आए हैं. एक सुपर चैट आया, मैं वो एड्रेस कर देता हूँ. शाहिद भाई, टॉप 4 प्रेडिक्शन आपकी. गुरप्रीत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द chat, brother, and thank you for the contribution. Shahid bhai, top 4 predictions. Back again. Can you hear me? Yeah. Yes. Okay. City, Arsenal, Newcastle, Liverpool, and not in that order. City, Arsenal, Newcastle, Liverpool. Okay. And not in that order. Okay. Not in that order. You want the order? Thanks for the contribution. Yeah, of course. Let's say Liverpool, Arsenal, City, Newcastle. Without. You think Liverpool will win the league? Yes, if they sign 2 players, and मैं नहीं कहूँगा Liverpool league जीतेगा तो कौन कहेगा? Come on, guys, we have to die on this hill. Yeah. Okay. I think अगर हम लोग 2 player भी sign करें ना शाहिद भाई, I think it's to still a fight. It's a still a big fight. Genuinely competitive, and I'll be confident. I'll be okay. Let's do this. You know, the attitude will change. Like rather than feeling frustrated, मेरा attitude होगा, okay, let's do this. Bring it on. You know. Okay, let's think about it. That's all that I want. 2 years ago, we almost did the quadruple, boys. Come on. Yeah. Okay. But last year, we were tired last year. We were tired. I know, Shahid bhai, but just to be back in the वो जो level हम reach किए थे वो बहुत high level था. You know, and that's what I'm saying. अगर हम वो 2 players sign कर लें, I will be like, okay, bring it on. You know, my attitude will be like, okay, City, bring it on. Let's get in a fist fight. Now I'm like, oh, you know, like I'll be trying to. Sir, मैंने आपको क्या black and white. आपने 2 player ना खरीदे ना, तो you're gonna finish 6th. अच्छा. If that, maybe 7th. अच्छा, इतना फर्क है आपके लिए? Oh, of course, sir. It's like the water that tipped it's the last drop that tips the water over the glass. You understand? Otherwise, I'm telling you, you're destroyed if you don't sign 2 players. Destroyed. You're going to finish 7th, 8th. It's going to be a terrible season, and you lose the manager. It's highly possible. You are going from living the yes, sir. Yes. आपने 2 player ना दिए तो सब कुछ fall apart कर जाएगा, और वो जब fall apart करेगा तो मैनेजर भी क्या. ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि लेकिन अगर आपने 2 खरीद लिए, it makes all the difference. अभी तो मैं ठंडा हुआ हूँ, इससे ज्यादा भी पागल हो सकता हूँ. You should see me when I'm watching. You see me when I'm watching the matches. That's why we wanted you here.
Because everyone loves your energy. You are like the Ranveer Singh of Menace in the Mog. Your energy is very infectious, Shahid bhai. We absolutely love it. We absolutely love having you over here, guys. Almost 500 people still watching. Please do like the stream if you haven't. Subscribe to Menace in the By Mog. the way, हाँ yeah, बोलना. by the way, Manas, I'm back. कैंसेलो की न्यूज़ सुनी तूने? पब्लिक क्या भाई, मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ. मैंने जो न्यूज़ पढ़ी ना, कोई तो बोल रहा है कि उसने बार्सिलोना में फ्लैट ले लिया है और फ्लैट का रेंट कुछ तो 150 के, मतलब समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, राइट. मतलब पब्लिक ने ये भी बोल दिया है कि उसका फ्लैट का रेंट. ये पता कैसे चलता है लोगों को, मैं ये जानना चाहता हूँ. हाउ डू पीपल नो स्टफ लाइक दिस? शायद भाई, कैंसेलो के बारे में क्या बोलोगे आप? इट्स लाइक, It won't happen. They can't. City still consider you massive rivals. They're not going to give you any of their players. I don't understand नहीं, why आई एम नॉट नहीं, Calvin Phillips rumor. Go ahead. कैल्विन फिलिप्स तो ऑनेस्टली, मतलब उससे अच्छा रादर गिव चांसेस टू Bajcetic एंड प्ले हिम. बट मैं कैंसेलो टू बार्सिलोना की बात कर रहा था. Oh, consider Barcelona might happen. Will happen actually. I think it will happen. Will happen. I think it will happen. Nidhi, I have a question for you. Yes, please. Have we signed any players in the last hour? No, we have not signed any players in the last week, Shahid bhai. We have not Because signed any. मैं एक घंटे से मैं ट्विटर चेक नहीं कर रहा था. I was hoping कि कोई good news ही दे दो तुम मुझे. ये एक चीज मैं बोलूं, अगर आप पैटर्न भी देखो ना, तो यार जैसे आपको ना परसों न्यूज आई थी कि लिवरपूल के डुकूरे के साथ लिवरपूल हैज सब फोन किया है और न्यूज हो रही है और बात हो रही है, वो सारी चीजें आ गई. उसके बाद अगले दिन आया कि नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट दैट. फिर आ गया कि एंड्रे के साथ पर्सनल टर्म्स अग्री हो गए हैं, रिलीज क्लॉज पे करने की बात हो रही है, वो भी हो गया. आज सुबह सुबह आपको मनु कोने की न्यूज आ गई कि मनु कोने दैट इज नॉट, मतलब वो शाहिद वो हमने ये नहीं किया है, राइट ऑफ नहीं किया है वो ट्रांसफर. तो अब तो रिसाइकल होने लग गई हैं चीजें. अब तो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू रिसाइकल. तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये बेवकूफ बिकॉज बना. सही बात है. बिकॉज पूरे जर्नलिस्ट को पता है कि लिवरपूल फैंस क्या है ना, अभी ट्विटर पे पैसा भी मिल रहा है. दे नो कि लिवरपूल फैंस डेस्परेट है एक सेंटर बैक के लिए और एक डीएम के लिए. तो बनाओ रिसाइकिल, पुराना रूमर को लाओ वापस, किसी एक एरे गरे नत्थु गरे का कोट ले लो और मेक एन आर्टिकल एंड गेट व्यूज एंड impressions and I really don't know. I really don't know who to believe right now. My sixth sense is telling me that it's too quiet. I'm not getting the feeling that something's coming. Now, usually, sometimes they do shock us and they do bring something in. Lekin, actually, I think what another problem is कि मुझे तो कोई player नजर भी नहीं आ रहा. कौन सा सेंटर बैक आपको नजर आ रहा है? कोलवेल की बातें होती थी, वो भी गया. He renewed the contract. I don't even see. But I don't even see any play. Who are they gonna bring? Look, I can tell you this much. It's probably gonna be the German league because obviously Schmatke का तो वहाँ पे सुई अटक गई है ना कि मैंने जर्मनी से ही प्लेयर लेना है. So अब आप मुझे लगता है मुझे प्ले स्टेशन पे जाके ना जर्मन लीग्स के सेंटर बैक्स और डिफेंसिव मिड्स दोबारा स्टडी करना पड़ेगा ताकि मैं वो मैनिफेस्ट करूं. लेकिन honestly, I am not against Decore or Andre. But I don't want to get rinsed for 80. I don't want to get rinsed for 80 million for Decore, man. Even it's not my money. Lekin mera dil tutega when we get pay 30 million over the odds. That's money that can be spent on another player. No, conceptually, there is a. That's why I was talking to you on Twitter about. No, there is a cost of inefficiency. Oh yeah, for sure. That extra 30 million that you talk about, 20-25 million, 30 million जो हम extra देंगे ना, वो inefficiency का आपकी कीमत है. वो आपने जो बेवकूफी की है ना ट्रांसफर विंडो में. अच्छा मुझे एक बात बता दो. Why don't they just play the Andre release clause? If there is a release clause at 40 million euros. तो ये 40 million euro क्यों नहीं दे देते उसके लिए? मुझे ये नहीं समझ मुझे ना ये पूरा सिचुएशन नहीं समझ आता है कि आप जब मतलब आपके पास पैसे हैं, आप खर्च करने के लिए रेडी थे, लेकिन आप मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि यार कि मुझे बस वही खिलौना चाहिए. मतलब
you आप you had the money, the world knows it, right? आप Guys, किस you Nidhi, think about this. मैं football 1980 से देख रहा हूँ और लेकिन I studied football all the way back. Like for me, 1930 World Cup. ठीक है, 1940s, 50s, Tom Finney, Stanley Matthews, Trevor Francis, all the signings that occurred, all the way this football has been managed. या ये data analytics जो है, ये तो अब आया है. It was always about the hunch. It was always about what do I need to make my team better? What does my manager want? It was always that. It was never कि इसने क्या किया, इसने कितने runs किए, इसने क्या किया. अब आप इन्होंने क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया कि इसके तो इतनी वैल्यू है लाविया की 46, ठीक है, और हमने से एक पैसा ऊपर नहीं देना. ओ भाई क्या हो गया भाई, ये तो मार्केट डायनामिक्स हैं. आपको फबिन्यो की क्या वैल्यू थी? फबिन्यो की वैल्यू 42 थी. क्या बात करो, 4 साल पहले आपने 42 में उसको लिया. 4 साल बाद आपने उसकी जूस निकाल के उसको भगा के उसको 42 में दोबारा बेच दिया. इन्फ्लेशन भी कुछ चीज होती है. कभी कभार आप कहते हैं यार इस कॉलम में मुझे ज्यादा पैसे मिल गए, आई कैन अफोर्ड टू स्पेंड अ लिटिल बिट हियर, मोर हियर. I can't believe what they did with Lavia. And I don't understand what they're doing when they're studying these players and they come to some figure and then they make it such an ego play that, you know what, we're not paying a penny more than 30 for Andre. We don't care if we lose that more than 50 million pounds not qualifying for the Champions League. But guess what? We're not going to pay an extra 5 or 7 or 10 million for it to earn that 50. Who is running this business? I mean, come on. How broke are you? You're apparently you have 150 million pounds to spend on one player. Excuse me, that is so dumb. I want to put that out there. That is so dumb that you're going to spend 150 million on a defensive midfielder who's doing 15 crunching tackles a game. He could break his leg any moment. Why would you not spend 150 million on 2.5 players or 3 players? What kind of nonsense strategy was that? 115 मिलियन एक प्लेयर पे आज को तो कल उसकी हैमस्ट्रिंग फट जाए, वो ब्लडी 6 हफ्ते 8 हफ्तों के लिए बाहर हो जाएगी. पागलपन है. अच्छा इसके लिए पैसे हैं? पागल हो गए यार. आंड्रे का 10 मिलियन देने के लिए पैसे नहीं है. मुझे तो समझ नहीं आती इनको क्या हो गया. इनको जगाओ जाके यार. तुम दोनों जा रहे हो ना अक्टूबर में, इनको चपेरा मारो, इनको उठाओ. इनको को क्या हो गया तुम लोगों को? हमें परेशान किया हो तुम लोगों ने साउथ एशिया में. हम सबका दिमाग सटक चुका है इधर. समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहे हैं. मोर देन दैट शायद में फ्रस्ट्रेशन है कि मतलब आप एक बंदे के लिए 110 मिलियन जैसे आप, और माइंड यू शायद में उससे भी 1-1.5 सीजन ही खेला ना प्रीमियर लीग में. वो कहाँ मतलब आपका कैसे वो कहाँ, और वो कहाँ कैसेमिरो मतलब टाइप एस्टैब्लिश्ड आया है कि यू नो इट इज गोइंग टू लाइक फॉर एग्जांपल साइनिंग लाइक कैसेमिरो, यू नो. Which player has Brighton sold who has been outstanding since they sold him? Cucurella? No. Outstanding. Maybe hopefully McAllister हो जाए. Hopefully Yes, McAllister. या और वो भी हम लोग ने लूप होल ढूंढ के रिलीज क्लॉज ढूंढ लिया कुछ तो, और खींच लिया उसको बाहर. Ben White. Ben White. Okay. Ben White is done well. But I Ben would White, not give him it. but Ben White Leeds का था ना वो कि उल्टा था. Ben White was a Leeds Dan player. no, Dan Burn. Dan Burn is Dan Burn is one who's done well at Newcastle. They've done well. They've done well. But I don't know. Coming back, 150 million pounds for Caicedo. You have that money. Okay, why don't you use 10 of that or 40 of that for Andre? Like I did not start the Andre rumor, boys. I haven't even seen him play live, for God's sake. मैंने तो उसका एक पूरा 90 मिनट का मैच भी नहीं देखा. तुमने इस रूमर स्टार्ट किया है. तुमने अपने जर्नलिस्ट को कहा हम इस प्लेयर में इंटरेस्टेड है, हमें ख्वाब है, या एलिसन ने लीक किया ये रूमर. खुद कह रहे हो कि ये प्लेयर हमें पसंद है, फिर खुद ही कह रहे हो कि ये इस काबिल नहीं है कि हम इस पे थोड़ा सा 20% प्रीमियम दे दें. तो क्या ये तुमने, what is this like box that you put everything into, guys? You have to move out of it. You got to make a bold decision. शायद भाई अभी तो अगर सोलांकी वेस्ट हैम भी चलेगा, वहां से 8 मिलियन भी आ जाएंगे. आपका हो गया, चलो कर दो. लाइक द पॉइंट इज आपको वहां से 8 मिलियन मिल जाएंगे ना. सो अभी एड इट एंड बाय आंड्रे राइट नाउ, फिनिश द डील ऑफ. आई नो आप, चलो मैं समझ सकता हूँ वो फ्लुमिनेस का
because वो उनके चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेज में है, ओके, एंड दे आर रिलक्टेंट Yeah, टू I know. सेल. So I think the reality is Pay that extra. Yeah, मतलब yeah. the point is they are just telling Liverpool, just imagine भाई तुम लोग चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में हो और तुम हमारे मेन प्लेयर को लेके जा रहे हो. एंड आई थिंक इधर हमारे क्लब की अच्छाई शायद से Do is you, coming through. do you think that maybe if we did a pre-agreement with them, we would feel a little bit better कि चलो जनवरी में तो आ रहा है, कर दो जैसे ना, कोनाटे बाद में कर आया था. दो, कर No, दो. कुछ मैं तो दे दो. I- just my हमारे point मुंह is बंद करने के लिए जनवरी की एग्रीमेंट कर दो ताकि हम जनवरी तक पे इंतजार करें. अब मुझे पता है कि लग रहा है भी कि हमें जनवरी में भी इसी तरह पिट रहे होंगे हम यहाँ पे बैठ के. ग्राउंड हॉग डे बॉयज, we're going to be doing the same thing. no, you know what, Nidhi, यार you don't have to do anything. इसी को replay कर देना January 31st को, यही podcast. See, it's like this. हाँ, first of all, नमन, thank you. हाँ, हम लोग भी वही बोल रहे थे कि उनका मैच है 25th को, उसके बाद अब यार वो बाहर भी हो गए तो थोड़ी ना हमको सस्ते में बेच देंगे, ठीक है. हाँ. Now, my here are the second things. leg, sorry Nidhi, second leg is on deadline day उनका. हाँ. Second leg बिल्कुल of सही their बात की. knockout is on deadline day, and we will apparently have 20 odd hours to make it done. भाई 100%. And what if they win? जीत गए. मेरा पॉइंट ये कि अगर आपको वो भी है तो वो भी आप अभी करके रख दो ना, कि आप अगर हार गए तो प्लेयर हमारा अभी, ये भी तो हम डाल सकते हैं ना स्टिपुलेशन. Maybe they're doing it. Who knows? I don't know. नहीं, शायद भाई, I will What not, do you think is going to happen this weekend, boys? Talk about football now. I कौन जीत will रहा है? not feel confident. I will not feel confident अगर हम अभी, so it's like this, शायद भाई, मान लो कि ना आपको भूख लगी है, right? You want to have a meal, right? But I'm telling you कि यार मैंने शाम का रेस्टोरेंट बुक कर दिया, so yes, it gives you a little bit of thing कि दिमाग में कि यार ठीक है शाम को we're gonna have a nice meal, but you want to have a meal right now, right? Yeah, of course. So it's like You're that. starving. You're starving, right? So हाँ, basically, लेकिन you could have also started at the night too ना. यही तो मैं कह रहा हूँ. मुझे तो लगता है जनवरी में ये पॉडकास्ट रिप्ले करना पड़ेगा हमें. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैंने एंडो खरीद ली है. Honestly, no, I can't even believe they opened the checkbook. शायद मैं अटक गया, आई थिंक. शायद मैं अटक गया. But, Oh, God. Conscious lowering of expectations. शायद मैं, आई थिंक आपका इंटरनेट इज एक्टिंग अप. I'm back. It's just एक दो मिनट सेकंड के लिए होता है. हाँ जी. How's it now? So आपके अपने एंडो के बारे में क्या, मुझे सरप्राइज यू साइंड कि एंडो. Yeah, and then it lowers the expectations. ना? All of a sudden we love endo. समझ आ रही है ना? तो ये this is their technique. Yeah. Oh. Yeah, I mean, it's the same thing over and over again. मतलब I have run out of patience थोड़ा, honestly, with all these guys. मानस, बट तेरे को कैंसेलो का क्या लगता है? किधर मेरे को बता ना क्या हुआ लेकिन उसका. मैं बोल रहा हूँ कैंसेलो का, मैं शाहिद भाई से पूछ रहा था. अपेरेंटली पब्लिक को ये भी पता है कि उसने बार्सिलोना में जो फ्लैट लिया है उसका रेंट कितना है. एक तो मुझे ये जानना है कि हाउ डू पीपल नो दीज थिंग्स, मतलब ये सब डिटेल्स कैसे पता चलते हैं, राइट? नहीं पता, राइट? बट कैंसेलो टू बार्सिलोना, स्मार्ट साइनिंग यार. आई डोंट नो यार, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि बार्सिलोना ने अपने यूथ सेटअप का ब्रेकफास्ट कैंसिल कर दिया भाई. हाँ, किया. What? Yeah, I don't Yeah. know whether that's true or not, कि मतलब ब्रेकफास्ट नहीं देंगे? because it is not been utilized properly, so उन्होंने एक टैक्सी सर्विस उन्होंने बंद की है और थोड़ा ब्रेकफास्ट कम किया है, और फिर ये ऑन दी अदर हैंड ये लोग कैंसेलो साइड, मेरे को पता नहीं यार क्या, honestly, like I don't know कि what is happening over there, to be honest. ब्रेकफास्ट कैसे बंद कर सकते हैं? I don't know, guys. Please confirm I chat में don't. कि is that This news true? this No, has मैंने to be पढ़ा true. है. This has to be रिजर्व टीम का ब्रेकफास्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि 5-6 प्लेयर आके खाते थे, तो उन्होंने कहा बंद कर दो. हाँ. This has to be fake. This has to be नहीं, fake. and it leaked basically, I guess. टैक्सी सर्विस का मुझे नहीं पता था. True, not true.
गाइस बता दीजिए क्या है, बिकॉज मैंने पढ़ा है ये टैक्सी सर्विस तो मैंने सुना है कि कैंसिल हुआ है. इवन आई रेड द न्यूज. Okay, आई थिंक I've got some आई थिंक friends in Barcelona. हाँ I'm big Barcelona fans. Spanish guys. I'll ask them, and I'll tweet. Uh, I'll हाँ, tweet you आप guys and let you बताइए. know. कोई ट्रू बोल रहा है. I don't. I don't. Apparently, I really don't so believe the this. reason the reason why I shared that is because अगर आपका मतलब issues इतने गहरे हैं तो फिर I am surprised कि they are making these signings even now, but good for them if they can. I मतलब let's see what happens. I think City के लिए बहुत सही है because he's out of Pep's plan and they're getting dough once again. भाई, Al Nassr has paid good money for Laporte, who is out when it comes to his plans, Pep's plans. So उनको Al Nassr से कुछ 15 से 20 मिल गए, इसके लिए 30 से Not 40 much. मिले. हाँ, Not much though. but the City. point is, that's what I'm saying ना शायद भाई, like the way they refresh. And the दोनों का decision मिला making तो is fast. Look, 50 sometimes it 60 doesn't matter 50 if whether 60 you're million. in business. Sometimes it's about the speed of the decision making. It's not about the value of the deal. It's about the speed of the decision making. You understand? Time is also money, right? So ये क्या करते हैं? They delay, and guess what? वो जो पैसे इन्होंने बचाने थे वो time में जाया हो जाते हैं. City make quick decisions. Boom, boom, Yeah, boom. and उनको उनको मिल गया वही 50 odd million मिल गया अगर ये दो प्लेयर के लिए, तो फिर then they can spend that money on Doku and Yeah, make things happen very quickly. yeah. And they are very smart यार. आपको कुछ भी बोल दो, but the way Manchester City is as you know their operations, I'm not getting back end of things, but the way they make their signings, the way they do everything, the way they've sold players, the way रहीम स्टर्लिंग को प्रीमियम में बेचा, वो लोग ने जेजूस को प्रीमियम में बेचा, जिनचेंको को प्रीमियम में बेचा, फरान टोरेस को अच्छे पैसे में बेचा. ये आपको उधर क्रेडिट देनी पड़ेगी, उनको देना ही Sir, पड़ेगा. I sent you the voice note, which I told you all the stuff they're doing in Manchester, all the jobs and the apprenticeships that they're increasing, how Pep went to Guys, I'm so sorry. Guys, to I'm so UAE. sorry. Mumbai City is playing Al Hilal. That means Neymar is coming to India. Oh wow, final okay. Wow. All right. Oh my God. Oh my God. This is big news. This is big news. This is massive news, guys. Absolutely massive. But वो पुणे में खेलेंगे ना, बेलवाड़ी. Because मुंबई का स्टेडियम 8,000 और पुणे में 40 और 1000. बट निधि, तू हाँ, समझ रहा है नेमार को देखने के लिए वो ग्राउंड में क्या हालत होने वाला होगा? हाँ, Can you of course. fucking imagine? Of course. Of course. Fucking hell, dude. Who else is on that team? Al Hilal. Al Hilal की टीम, let me just Al Hilal टीम, मतलब मुझे सिर्फ फबिन्हो, नेमार ही पता है. Oh, they have a big bloody team, man. Okay, this is Al Hilal की टीम. 1 second, let me display. Are you sharing it, Nidhi? Yes. I'm sharing my screen. Give me 1 sec. Can you see it? Not yet. Okay. ये है अल हिलाल की टीम. रूबेन नेवेस, कुलिबाली, नेमार, मित्रोविच, एंड या मतलब सुपरस्टार्स तो यही हैं. कुलिबाली, रूबेन नेवेस, मित्रोविच, नेमार, एंड एक जो रोमा, मैल्कम याद है इसका पूरा ड्रामा हुआ था, रोमा जा रहा था, ही एयरपोर्ट से भाग गया था वो, सो वो है. देयर इज, एंड यासीन बोनो ऑफ कोर्स. Oh, Bono bhi hai. Bono is a goalkeeper. God, man, they bought a lot of players. I gotta tell you, they bought a lot of players in the last month. Saudi Arabia have. Wow. Unregistered players, okay. Mitrovic, भाई साहब, Neymar, मतलब चैंपियनशिप का बेंजेमा भी आ रहा है निधि. ड्रेक. मिट्रोविच. So You know ये the है. story. You know the story with Mitrovic, now. Okay, basically, they put a bid in for Mitrovic, and the son of Shahid, Tony Han, went on a radio station in the US and said कि ये इनके पहले human rights to check करो, इन्होंने बंदा मारा हुआ है, ये है वो है. तो उसने बड़ा बोला है जाके गुस्से में कि मेरे प्लेयर खींचने की कोशिश करे, मैंने प्लेयर नहीं देना, ये वो. उन्होंने अगले दिन मार्को सिल्वा का बिड डाल दिया. उन्होंने कहा मार्को सिल्वा तुझे हम $40 million ऑफर करते हैं, 10 million तेरा रिलीज कॉस्ट है, तू आ जा. उन्होंने कहा अच्छा तू हमारे बारे में बकवास करता है, चल हम तेरा मैनेजर ही उठा के ले जाते हैं. वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मार्को सिल्वा को रोका,
पैसे पूसे दे के मिनटे टल्ले करके, क्योंकि मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल्म. एंड देन एंड पे ये फाइनल फैसला ये हुआ कि उन्होंने मिट्रोविच को बेच दिया. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट द सऊदी लीग वांट्स, द सऊदी लीग गेट्स. ओके. Yeah. All right, they can't mess with them right now. Honestly, they're on a mission to build this up. So Salah is a big question mark for Liverpool moving forward next year for sure. If we don't qualify for the Champions League, we've got how long big problems. शायद भाई एंड निधि दोनों के लिए, आप दोनों के लिए क्वेश्चन, अगर हम मोहम्मद साला की बात करें, नेक्स्ट ईयर या द ईयर आफ्टर दैट आपको क्या, बिकॉज देखो एक चीज निधि ने एक चीज बोली थी विच आई टोटली एग्री कि मोहम्मद साला विल बी द बिगेस्ट साइनिंग फॉर देम, फॉर द साउदी लीग, मेरे हिसाब से द बिगेस्ट अरब प्लेयर द in the world right now. Yeah. Look, when it comes to Saudi League, I refuse to make any predictions. Man, I can't, honestly. Things can change like this. देखो सुबह उन्होंने नेमार के लिए bid माला. Oh, they even had a bid for Mbappe accepted. Boys, come on. I'm not making any predictions. Okay, talking about Saudi League, what do you boys think about the proposal that is going around कि एक सऊदी टीम को चैंपियंस लीग में एंट्री देंगे? हो जाएगा, हो जाएगा. नहीं होना चाहिए ना, it's नहीं होना चाहिए. It's यूरोपियन चैंपियंस लीग यार. देखो हो जाएगा. देखो असल प्रॉब्लम ये वो अलग बात है. फुटबॉल की जो प्रॉब्लम है ना, वो यूएफा और फीफा का पंगा है. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फुटबॉल. एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि अब आपको एक प्रॉपर वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्लब वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड चैंपियंस लीग बनानी चाहिए, जिसमें यूएस की टीमें, मेक्सिको की टीमें, कोपा लिबर्टडोरेस, and you should make this calendar common, and all these clubs should come, and you should have a World Cup of clubs every year, and that should be the ultimate Champions League. That would belong to FIFA, because UEFA only has jurisdiction over UEFA clubs, and UEFA thinks that it as an organization is a bigger organization than FIFA is. So if this is the fight that goes on and that restricts the correlation of a proper calendar in it. And now if the Saudi team joins UEFA, FIFA is going to have massive problems because its own club World Cup will be weakened. And UEFA is already upset with FIFA because FIFA is trying to make this 32 club World Cup, and उसकी रिटेलिएशन में उन्होंने अपनी चैंपियंस लीग को बड़ा किया. तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनको अलाइन करना बड़ा जरूरी है for the benefit of football, to incorporate the United States League and the Copa Libertadores winners and the Asian teams that are, a lot of money is being invested in Asia, guys. अभी तो सऊदी में हो रहा है, कतर में हुआ है. Future में India is going to be investing a lot in football. Football is very popular in India. It's even popular in Pakistan, but Pakistan doesn't have the economy right now, but India does. So these things are going to come up, and eventually, like, this is gonna they're gonna have to sort this out, and they're gonna have to level this calendar properly so that they can manage this. Just chucking one Saudi team into the Champions League is just gonna be throwing fuel to the fire. It's a bad idea. I don't agree with it all. The legitimacy of the idea is a different topic of conversation altogether, Shahid bhai. But अभी आप देख लो, Kazakhstan plays in UEFA, Israel plays in UEFA, Russia is not allowed because of political reasons. Players की क्या गलती है भाई? Club की क्या गलती है? आप समझ रहे हो? All these things already exist. और क्यों है ऐसा? पैसा. सऊदी बोलेगा एक चैंपियंस लीग टीम एवरी ईयर वी विल पे यूएफा 1 बिलियन यूरोज एवरी ईयर. आपको क्या लगता है? ना बोलेंगे? खत्म हो गया. मतलब 1 बिलियन ऑफ एक्स्ट्रा रेवेन्यू खींचे में क्या क्या जाएगा, क्या क्या कर सकते हैं हाइपोथेटिकली. इट इज ऑल मनी. It is all money, and it will only. शायद भाई you're trying to tell me चैंपियंस लीग हम गए थे पेरिस में. They can't afford better security. They can't. Not at all. It's terrible. It was terrible. They can't have, and this is a story of every Champions League final. Even this year they did it. Huh? Even this year, Nidhi, do you know how badly they treated the Manchester City fans? And that was the same stadium that hosted the 2005 Champions League, which had the same problems then too. The long walk, the traffic congestion. I was there in 2005. The traffic congestion, long walk, like going over hills.
crossing mountains. It was like that stadium's in the middle of nowhere, guys. It's in the middle of nowhere. They had nothing organized for the fans again. Honestly, they're a disaster waiting to happen. I'm telling मैं you. वही बोल रहा अभी आप देखो वो कॉन्फ्रेंस लीग में वेस्ट हैम फैंस को 5,000 सपोर्ट टिकट्स मिले हाँ. 5,000 आप सो आप स्पॉन्सर चैंपियंस लीग में भी आप 25-25 देते हो 20-20 देते हो फिर 25,000 कॉर्पोरेट्स को जाता है सो देखो क्लियरली पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट और पैसे पे ही ये धंधा चलता है और जो हम फूल्स है जो इमोशनली अटैच हो जाता है अपने क्लब के साथ But we're also spending the money, by the way. हाँ Okay, जी so like, you know, मैं वही बोल it's रहा not ना like हम तो no, but we're not हम free तो customers. जी बट हम तो पैशन प्यार की वजह से कर रहे हैं हम तो Oh God, प्यार I got an update from Liverpool. It's different. How does Trent hybrid role change the way Liverpool centre backs play? Joel Matip explains. This is not the update I want, Liverpool. I want an update about signings. I don't want to know what Joel thinks about the new hybrid role. Okay, tell Joel to get me the 3 points this Sunday. Look, ये अगर ये हफ्ते guys we'll end the stream in the next few minutes अगर if we get 3 points अच्छा मैं सिर्फ दोनों से एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे दी अगर हम न्यूकासल को हरा दे निधि ओके मूड चेंजेस अ लॉट निधि रो मत इट्स ओके निधि मैं रो नहीं रहा हूँ साले मैं एक साथ दो चीजें कर रहा हूँ हाँ so if we hypothetically beat Newcastle how confident will you be for the rest of the season Me 3 or games Nidhi? 7 points unbeaten Nidhi starting with you No, I'll not be very confident because यार ये team it's not built to last. Yeah, that's it. आप मतलब यार देख मानस हाउस ऑफ कार्ड्स बनाते हैं ना उसमें देयर इज अ रीजन कि आपका जो सबसे नीचे वाला जो बेस होता है ना दैट इज द बिगेस्ट राइट एक अच्छे नंबर 6 की जो पोजीशन होती है ना डीएम की होती है ना वो पूरे फुटबॉल में फॉरगेट क्लॉप का सिस्टम पेप का सिस्टम जावी का सिस्टम एंचेलोटी का सिस्टम जिसका सिस्टम आर्टेटा जिसका नाम लेना है ले ले राइट भाई Arteta doesn't belong in that company, by the way. No I mean चलो ठीक I know. I'm not putting Arteta up there I'm just saying कि किसी भी टीम जो अभी अच्छा कर रही है ना या बुरा भी कर रही है उसका देख लो नंबर 6 की जो पोजीशन होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है मैं ये स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि फेबिनियो को जाने देना गलती थी राइट नॉट बिकॉज कि हमको मतलब उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए था रिप्लेस तो करना चाहिए था लेकिन इट शुड हैव बीन अ सॉफ्ट ट्रांजिशन ये हमको पैसा आ गया हमने बेच दिया ठीक है ये now the problem is that now you have going into the season with Wataru Endo ठीक है जो यार देख again मैं मतलब again nothing against Wataru Endo ठीक है but if he was that good ना भाई वो स्टुटगार्ट में नहीं खेल रहा होता राइट वो 30 साल की उम्र में आगे बढ़ गया होता मैं जानता हूँ यू कैन अनकवर जेम्स हम जीनी को लाए थे रेलीगेटेड टीम से हम और भी प्लेयर्स को लाए हैं बट यार वो सारे प्लेयर्स बहुत यंग थे ये 30 की उम्र में राइट तो द थिंग इज कि डीएम स्ट्रांग नहीं है आपको और मैं तेरे को एक चीज गारंटी लिख के दे रहा हूँ मानस वो जो हम शुरू में बात हो रही थी ना कि कोनाटे को हम वो सिस्टम खिलाते हैं जहाँ पे वो राइट में ड्रिफ्ट करता है कोनाटे इज अ बिग गाय उसको इंजरी होनी ही है इस सीजन आई डोंट वांट इट टू हैपन आई डोंट वांट इट टू हैपन बट इट विल हैपन बिकॉज ही इज अ बिग मैसिव गाय एंड वी आर मेकिंग हिम रन लाइक अ बुल every day. और जब वो होगा ना तो बेसिकली आपका राइट क्योंकि आप ट्रेंट को तो आपने मिडफील्डर साइन किया नहीं तो आप ट्रेंट को पिवट रोल में यूज कर रहे हो राइट बैक आपके पास एक था वो आपने बेच दिया है आपने लोन पे डाल दिया है बैकअप तो साइन आपने करना नहीं है तो वहां पे खेले आप खिलाओगे गोमेज को और मैं बोल रहा हूँ गोमेज नथिंग अगेंस्ट गोमेज इज नॉट द सेम प्लेयर पोस्ट इंजरी अच्छा कैन आई जंप इन आई विल नॉट बी कॉन्फिडेंट अगर हमने न्यूकासल को हरा भी दिया तो भी कैन आई जंप इन Wataru Endo is Japanese तो somebody joked on Twitter कि उसको Japanese tax लगाओ Japanese live to 90 years old तो ये 30 का नहीं है इसको 25 का गिन लो ठीक है इसको Japani tax लगाओ that's the first thing that came to my mind the second thing that came to mind very good point about Ibu's size but also if we win on Sunday I'll just say this much कि 3 मैच तो आपने गुजारा कर लिया 38 कैसे करोगे
इस squad के साथ, how the hell are you gonna play 38 matches with this squad, bro? You can get through 3 matches, but you're not gonna be able to get 30. Okay, what about the Europa League? You need reinforcements badly. But even if obviously if you win the match, it'll be great. Okay, it's very important. It's a 6-pointer. It is negligent to not have a amazing squad in this match. This is a match worth 15 million pounds, boys. It's a 6-pointer for the Champions League spots. And you're going in there unprepared. Did you not get the schedule in June? Did you not realize that you have Chelsea and Newcastle before the window closes? So you have to have this squad in place? इनको छितर मारो यार, पागलपन है. अगर देखो ये बहुत critical match है Newcastle वाला. And plus, do you know what 3 divided by 38 is? That's 9%, boys. 9% season का गुजार दिया, player अभी तक नहीं लिए. पागल हो ये तो. And also, so but I really hope we do win. I hope we do win. But look, उसके बाद we got Villa, we've got another match. I think it was Brighton भी बीच में फिर रहा है. And उसके बाद वो जब stupid Europa League start होगा, तो फिर तो God help us. सही बात. यूरोपा लीग में तो भाई चुपचाप अपने यंगस्टर्स को खिलाओ. If I see Trent, Alexander Arnold, you will. Van Dijk, Salah, if I see these players starting in any time before quarter final na Europa League में, तो but Nidhi, why, like, do you know quarterfinals, that's 2 matches, semi-finals 2 matches, that's 8 matches, because quarterfinals से पहले का मैच होता है उस वीकेंड का, और क्वार्टर फाइनल आता है, फिर क्वार्टर फाइनल के बाद का मैच होता है, फिर क्वार्टर फाइनल के सेकंड लेग से पहले का मैच होता है, फिर उसके ये तो हर मैच के सैंडविच होता है 2 मैचों के साथ. ठीक है, तो वो 2 मैच 8 मैच आपने लीग के यूरोपा लीग के लिए कुर्बान कर दिए, उसको सैक्रिफाइस कर दिए, सो यू कैन बेसिकली बैलेंस आउट. अच्छा, इसने वेडनेसडे को खेलना, इसको सैटरडे को नहीं खिलाते, वेडनेसडे को खेला, इसको संडे को नहीं खिलाते, तो ये तो फिर आपके 8 मैच गए सर. आपके पास तो डेप्थ ही नहीं है हैंडल करने के लिए. I think the way we approach Europa League is totally based on कि हमारे लीग में क्या हालत है, and vice versa. अगर हम लोग लीग में supposedly बिछड़ गए पीछे, जो अगर हम नहीं साइन करेंगे, जो लाइकली है, God forbid यार, कोई अच्छी बात नहीं उसे निकाल यार. नहीं, मैं वैसे बता, और फिर आई एम सॉरी आपने बोला अच्छी बात बताओ, बट मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ. हम लोग ने न्यूकासल के अगेंस्ट डबल किया था. दैट्स अ गुड थिंग, बट शायद भाई हियर कम्स द रियलिटी. ब्रूनो गोइमारेज दोनों मैच के लिए अनअवेलेबल था. ओके, वो दोनों मैच में ब्रूनो गोइमारेज अनअवेलेबल था. अभी ब्रूनो गोइमारेज है. They've signed fucking Sandro Tonali. They've got Javi Barnes. They've got Livramento now. They've got Lewis Hall. भाई उनके options देखो. Callum Wilson can't get a start. Isak is a new signing for them. It is going to be a fucking tough match, भाई. Yes, Sunday. And you know they're really good at home. They've got that atmosphere going. You know, it's an evening match. And Shahid, you've been following football for 43 years. You would know how passionate those Geordies are. Oh yeah, listen, I went there, right? I went there when Keita scored the goal and we won 1-0 the season before when we were going for the quadruple. And I walked around Newcastle and I told everybody, I said the team that will win the league after Manchester City is Newcastle United. Number 1. Number 2, if you're a Newcastle United fan, all you need to do is stay alive for 4 years. And your lifelong dream of winning the English Premier League is about to come true. You just got to stay alive. 4 साल के अंदर you're winning this league. This is my assessment of the situation with regard to Newcastle. And I went there. उस वक्त the atmosphere was quite hot. But last year when I saw on television, it's even hotter. Yeah. The atmosphere in the stadium, even more flags. Yeah, what? And night match. They cranked it up to the next level at the night match. This is all due to the ownership. Actually, it's a great stadium. There's a lot of passion. But Mike Ashley the stadium wasn't a good place to play. Now, जितना बुरा था उतना उन्होंने इसको अच्छा कर दिया. पैसे पूसे लगाए ये वो. अब वो luckily it's still early in the season, so 4:30 in the evening the floodlights aren't going to be on. Okay, but if the floodlights were on, I would have thought we'd lose. Honestly, because the crowd is going to be going crazy, guys. And last year, तो एक तो match पे मैं था ना when we won 2-1 at home. वो तो आखिरी minute में goal हो गया, तुक्का ही हुआ है किस्म का. वो तो it was like a unbelievable thing, you know, when Carvalho scored. And then the second match, we got the handball. I mean,
I won't say it was a lucky handball, it was a lucky break, guys. Okay? Yeah. 11 on 11 was a close match. So that red card changed the match. That's how you got the 6 points. You took them, you deserved them, you got them. But you better be ready to play on Sunday. The only thing I can say is that if Endo plays or if Thiago plays the number 6, that's a fresh Thiago. I can't say whether he'll be able to play the week after, but he might give you an A-class performance. And the red card being overturned is a big deal. Big deal. Big deal. I think Thiago, by the way, Nilesh is a huge Newcastle fan. I know him since 2005. So I'm very happy for him. He's like a year or two younger than me. I remember going to screenings with him. वो एक बेचारा अकेला न्यूकासल की जर्सी पहन के आता था. लोग उसको देखते थे, तो क्या कर रहा है भाई? What a time to be alive, Nilesh. Congratulations, भाई. यार मैं थियागो के बारे में आपने बोला ना शायद, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ. First thing, guys, 500 people like the stream and subscribe to Menace and the Monk. थियागो को जैसे आपने बोला ना, he plays, gives a grade A performance और फिर अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट वीक, हमें उसको वैसे ही यूज करना है. हम उसको बोलना है कि भाई तेरे को महीने में 2 मैच स्टार्ट करना है हमारे लिए. तेरा 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 जॉब ये है कि महीने में 2 मैच स्टार्ट कर और फिर बाकी तेरे को ट्रेनिंग में आना है मत आ, जो खाना खाना है खा, जितनी दारू पीना है, बट तू आप 2 मैच के लिए, तेरी यही जरूरत, तेरे को हम नहीं घिसेंगे. लेकिन you know तूने sometimes पठान देखी है ना? तूने पठान देखी है ना? हाँ. Basically, Thiago has to be used like Salman Khan in Pathan. But you know, sometimes he gets injured in training. Do you know that? मैं इसको स्टडी करता हूँ ना, मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं इसको स्टडी करता हूँ. कभी कभार वो ट्रेनिंग में वो उसको हिप में इंजरी हो जाती है, ट्रेनिंग में 6 हफ्ते के लिए गायब, और भाई मैच में तो इंजरी मेरे आंखों के सामने तो हो रही है ना. आप ट्रेनिंग में फिर भी भागते हो ना, उसको ईयर इन्फेक्शन से वो बंदा बाहर हो जाता है. यदि 3 महीने की छुट्टी के बाद इंजरी आ गया यार, कम ऑन यार, 2 महीने से छुट्टियों पे हो. ईयर इन्फेक्शन होता है और वो बाहर हो जाता है. He got injured like a nail, right? He had like a muscle injury. How the hell is he not fit till like September? What is going on for the last 3 months? And in Instagram पे तो बड़ा आराम से फिर रहा है, बीच में फिर रहा है, बच्चों को गोदी में लेके फिर रहा है. ओ भाई ये कैसे? Where is he यार? It's like, I don't know, you know, but I think he's fit this weekend, and I think Endo's going to be there, and I think Bachelik is going to be there, and I think Liverpool will be ready to play. It's going to be a hell of a game. And you know what the sad thing is? Guess who's going to decide the game? The shitty ass Premier League referees. Yeah. That's what sucks. Okay, because they can't handle a big game. Okay, they can't handle it. यार हासदी आकिस को फिर से रेफरी बना दिया यार. वो बंदे ने रोबो को मारा हुआ है. Can I say one more thing? यार ये VAR तो बंद करवा दो यार. देखो, when VAR came, I knew why VAR came. हुआ ये कि you get a red, like a blatant mistake, right, on a pitch, right? And all of a sudden, everybody watching television from China to the United States knows the mistake has happened, except for the referee. So it looks really embarrassing. एक जमाना होता था, मैच देखते थे, ऑफसाइड हुआ, एक छोटा सा रिप्ले आया, पता नहीं था कि नहीं था, but ऑफसाइड था, ठीक है. Goal line technology, you get over it, you feel like you got robbed, but you don't really know you were robbed. But now, within 10 seconds, you know the match is continuing, and you know that ये match अब obsolete हो चुका है, कि इस match में एक massive mistake हो चुका है, तो ये VAR को लेके आए, ठीक है. लेकिन they're still making massive mistakes. And they're using it now for personal biases. पहले क्या होता था? Tierney hates us. We have to deal with Tierney like, 3 times a year. Now we have to deal with Tierney 9 times a year. 3 times he's in the referee. 3 times he's the VAR. 3 times he's the fourth official. So he has 9 opportunities to screw us over. Okay, this is really bad. We don't want this. Okay, and the worst thing is, guys, suno zara dhyan se meri baat. You know you can't even celebrate a penalty save anymore. Even when your goalkeeper saves a penalty, the first thing you think is iska pair line se aage to nahi tha. Iska paw na. Ye kya hai yaar?
सारा हफ्ता हम वेट करते हैं मैच देखने के लिए, सारा मैच हम वेट करते हैं गोल के लिए। वो एक एक्सप्लोजन मारनी होती है हमने अपने सारे हफ्ते की फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा दुनिया के ऊपर जो हमें चढ़ा हुआ है, बीवियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बॉसेस के ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर। We can't even do that anymore. Okay, I hate it. I liked it in the beginning, but now I've realized that it's just a mafia. Okay, it's a mafia and it's a way to do corruption. And one of my guys, Avi, he does the DNR podcast. They're based out of Liverpool. It's a great podcast. Don't mean to plug another one while I'm on this one. Everybody, please like this one. This is the best one as well. Born and Red पता है. Okay, he's going around saying that there's about to be a scandal coming out about a referee in a betting syndicate. ठीक है, और मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ कि ये गाड़ी में बैठ के रोलेक्स लेते हैं अपने सिटी के मालिकों से। ओके, इनके चेक करो छुट्टियां, ये अबू धाबी जाके इनके होटलों में फ्री रह रहे हैं, इनको ये एयरपोर्ट पे पहुंचते इनको चाबी मिलती कमरे की, बस सीधा कमरा, ना रजिस्ट्रेशन ना कुछ, चाबी डाली, 5 स्टार 7 स्टार होटल में कमरे में बैठे, नीचे आए, गाड़ी वेट कर रही है, शॉपिंग करने गए, जब चीज उठाई दुकान से निकलने लगे तो सीधा निकल गए, पीछे से किसी ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया। ये हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये हो रहा है मेरे सामने। I was at the airport once, okay, I saw the entire Manchester City team. क्या नाम था उसका, जो उनका Pellegrini था उनका मैनेजर, the Argentine, the Chilean guy. Chilean guy. I think Chilean guy. Chilean. The year after the year after they won the league, I think it was the year of the slip. Probably. Yeah, Gerrard's slip season was Pellegrini. Yeah. I ran into these guys. They had just gone to Abu Dhabi to celebrate with the owners, and they were at the airport. And look at my bad luck कि मैं लिवरपूल का फैन भी उधर एयरपोर्ट में था। मेरे सामने लेस्कॉट पूरी टीम ने, एक छोटा सा अबू धाबी एयरपोर्ट पे रोलेक्स की कियोस्क होता था, सारे घुसे हुए थे और रोलेक्स लेके जा रहे थे। And I'm thinking to myself कि ये फिर इधर से मेरे यहाँ से रेफरीज के लिए भी खरीदे जा रहे होंगे। I'm telling you, there's a lot of corruption in the refereeing in the Premier League. I've been saying this, I've been bleating on and on about it for years. No, everybody thinks I'm stupid. And then people come on Twitter, prove it, show us, do you have any evidence of it happening? Evidence will come, okay? Chori kabhi chukti nahi hai. I don't know about itna blatant. They do get paid well though. But I don't know about corrupt, but definitely inefficient. We'll see. I'm telling you, you'll see the corruptness. Listen, could you ever imagine Lucas Paqueta getting 3 yellow cards on purpose? इतना अमीर आदमी, ठीक है, बस होता है, ये चीजें हो रही हैं भाई, ये हो रही हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। Something. Ivan Toney का भी कुछ मतलब explain to me why they didn't look at McAllister's red card on VAR again. Why? When it was such a split-second decision, why they didn't tell him, come and look at it? This is kind of split-second. You may have taken your red card out a little bit too fast. It's a red card in the 60th minute, guys. Okay? You're adding the time on nowadays. Go and look at it. It's going to change the entire course of the match. Okay, which City player got a red card like that ever? Can you name a City player who's got a red card like that? Has Rodri ever gotten a red card in his career at Manchester City yet? I don't know about all this, Shahid bhai. मतलब ये तो this is getting into conspiracy theory. But I'm in it. I'm in the conspiracy theory. मैं believe करता हूँ conspiracy theory. हाँ मतलब ये तो थोड़ा, हाँ मतलब ये तो थोड़ा ये है, मतलब उस पे कैसे प्रूव करें और क्या है, मगर आई फील दैट डेफिनेटली, आई थिंक एक जैसे अप्रेजल होता है ना, जैसे रिव्यू होता है ना, एक रिव्यू तो होना चाहिए एंड दैट पैनल हैज टू बी इंडिपेंडेंट। इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये रिव्यू भी करते हैं, आपस में ही कर लेते हैं। ये बोगस रेड कार्ड दे सकते हैं, हम इनके खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं फैला सकते, क्यों नहीं? हम भी बैठे हुए हैं करने के लिए, ठीक है भाई, मैं तो मानता हूँ। And I agree with you 100%. You made a very valid point. There needs to be independent. Even the media is rigged here. They're sitting in the media and they're taking care of their friends and they're not even telling.
seeing it as they are, and then हम सबको पागल बनाया हुआ है यार उन्होंने. कह रहे कि, oh well, you know, it's kind of a red card. Studs were up and this and that. And you know what? Look, you saw the Harry Kane red card that Robbo didn't get. The push into Jota, the handball by Rodri, and we can go on and on and on. I am a firm believer that there's a bias against Liverpool. नहीं sometimes शायद भाई sometimes things have gone in our favor also. ऐसा नहीं है मतलब we have got things in our favor also. Where you know नहीं होना, जैसे फॉर एग्जांपल फबीनो का लास्ट सीजन एक रेड कार्ड था, क्लियर रेड कार्ड था, नहीं दिया. बहुत बार होता है, जैसे हमारे जैसे अभी द पेनल्टी वी गॉट वाज लाइक अ 50-50 डिसीजन अभी जो हमको मिला बोर्नमथ के साथ. सो ऐसा नहीं है, even I thought was a penalty, but it was soft, like 50-50 tha. What I'm saying is, I don't know about corruption. If you tackle someone in the box, yeah, it's a penalty all day long. The same as it was tackled in the box, it was a penalty all day long. Yeah, come on. Do you remember the penalty that was given against Robbo at Brighton in the 94th minute? Does anyone remember that? No, Shahid bhai, I remember. I understand. But what I'm saying कि ये ना सारे क्लब के फैंस को लगेगा कि उनके अगेंस्ट बायस है. मैं ये बोल रहा हूँ. द पॉइंट इज कि ये जो रेफरीज हैं वो आई थिंक दे आर नॉट डूइंग, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. इट इज नॉट कि एक ही टीम के अगेंस्ट बायस है. बहुत बार जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अगेंस्ट बहुत डिसीजंस गलत हुए, हमारे फेवर में भी कुछ डिसीजंस हुए. अब उसका वॉल्यूम ठीक है, वो डिबेटेबल है, लेकिन द पॉइंट इज कि जो रेफरीज है ना, खास करके प्रीमियर लीग में और ला लीगा में भी जो रेफरीज है ना, क्वालिटी कम है. एंड दैट्स बिकॉज नो अकाउंटेबिलिटी. अब वो अभी जैसे वो ब्रूनो ने एक चीज बहुत सही बोली थी वैसे, जो इन अ वियर्ड वे इंटरप्रेट हुई. उससे बोला कि जब हमको कॉल मिला, जैसे ओनाना ने जो चोकस्लैम मारा, उसके बाद रेफरी जाके वुल्व्स के मैनेजर को जाके अपोलोजाइज किया. नाउ अभी उनको जो हैंडबॉल मिल सकता था स्पर्स के अगेंस्ट, विच एवरीवन थॉट वाज अ पेन. अब आपको जो बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बट वो बोलता है कि अभी हमारे मतलब विल दे कम एंड अपोलोजाइज टू अस. The sad part is कि शायद by this conversation started Newcastle Liverpool कि आपने बोला कि let's hope this is not decided by the referee. Deep down सबको ऐसा लगता है कि ये लोग साला कुछ ना कुछ तो कांड करेंगे. Like, yeah, for sure. They're incompetent. That's the number one factor. There's no doubt about that. But Paul Tierney there's something there. There's something there with regard to in that linesman of his. They have an inherent bias against Liverpool. There's no doubt about that. And definitely ये आपस में दूसरी टीमों के फैंस को लड़ाते हैं क्योंकि ये इतने incompetent हैं. फिर हम आपस में तो इतने उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए ना. So but definitely look, the handball. Look, at the end of the day, they didn't give us the handball either, right, against Chelsea. So the problem for FIFA again is that they keep changing the laws every year as well. So the handball law has changed a little bit, and the ball has to travel. The ball has to travel from a farther distance for it to be considered a handball. Because if it's right up against you, even if your hand's a little out of position, if it's within a yard, you can't really move your hand out of the way. That type of thing. So they've changed the handball every year. They change it. It's such a mess. It's such a mess. We really don't know what is a handball anymore. Bharat, cheers for the contribution. We are fan, but appreciate Shahid by theory. City players even don't get yellow cards for obvious challenges. Last year, Casemiro got 2 reds. Nonsense. Bharat, thanks for I agree, man. I agree, Bharat. You're 100% right. मेला लगा हुआ है यार रॉड्री का तो. रॉड्री का इज अ क्यूरियस केस. उसको तो पता नहीं रॉड्री तो मतलब क्या है यार, मतलब द गाय कैन गेट अवे विद एनीथिंग ब्रो. लाइक मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे कर्ण को ऐसे वरदान मिला होता कि नो एरो कैन पियर्स योर आर्मर, वैसे उसका कुछ है. Nidhi, you're a pragmatic realist. That's why you don't believe in conspiracy theories. I know that's the reason, but don't worry, I'm going to convince you. Okay. Guys, let's end this. It's been a long ass live. Shahid bhai, thank you so much. I know. Just letting people know, Shahid bhai literally watches 10 to 15 games at Anfield every season. मैं शायद से कम बता रहा हूँ. शाहिद भाई travels the world with his business, for his business. शाहिद भाई, thank you so much for your time. Really appreciate it. और
मतलब मिलते रहना चाहिए शायद भाई, एटलीस्ट वंस अ मंथ टाइम निकाले हमारे लिए, मजा आता है Of course, I'm always available. Thanks so much for having me. Any predictions for this weekend, guys? Since that's like Oh, the cliched way to end a podcast. I'm not optimistic, सच बोल रहा हूँ. We are playing against a very very good team and away from home. If you give me a draw right now, मैं ले लूंगा. मैं ले लूंगा अभी. मैं सच सच बोल रहा हूँ. अगर आप मेरे को बोलो ड्रॉ, मैं ले लूंगा आग बंद करके. I think it might be 1-1 actually. Yeah. But I'm gonna predict 3-1 to Liverpool because you know what? Screw it. I'd rather my predictions be wrong. Like, I'm Fair. going with my team. Sir, I fucking want my team to win, of course. When तो फिर we दे start, देते हैं, गलत प्रेडिक्शन भी दे देते हैं, देखी जाएगी कौन सा हमने पैसे भरने हैं गलत प्रेडिक्शन देने के. गलत बातें करके तो हम लोग इतने सब्सक्राइबर लाए हमें शायद. But I don't care about that now. 3-1 Liverpool. Niti, 7-0. Abhi is gonna see a repeat 7-0 Niti against a different United. तू पागल हो गया. Nah, man. I mean, realistically, I'm not confident about this game. Of course, मैं अपनी टीम के अगेंस्ट प्रेडिक्शन तो नहीं करने वाला हूँ, राइट? नहीं, ये तो नहीं हो बट सकता. हाँ, वो तो मैं नहीं यहाँ बैठ के बोलने वाला हूँ कि अरे हम हार जाएंगे, वो तो नहीं बोलूंगा मैं, राइट? नहीं. मगर वो तो हमने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी नहीं बोला था Niti. हाँ, हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो तो मैं नहीं बोलूंगा. लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर जीतना है ना तो मतलब एकदम, मतलब बोलते ना कि ऐसे खड़ूस शूलेस से पसीना निकलना पड़ेगा. फिर तो कोई इंजर भी हो जाएगा. 4-5-1 play Thiago, Endo, Bajcetic, McAllister, Szoboszlai, Salah up top. मतलब बसड़ मचा दो बेंच. Do you think he'll start Nunes? He should actually. No, I think so this is a point of contention. This is a point of like much debate कि नूनेस को क्यों नहीं स्टार्ट करते. यार नूनेस ना, आप नूनेस जैसे मतलब केओस वाले प्लेयर को ना आप बिना कंट्रोल के स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट? इट्स लाइक टाइंग एन एंग्री हॉर्स एट द इन द फ्रंट ऑफ योर कार्ट जब आपका कार्ट उतना मजबूत नहीं है. it might be the right match for him, Nidhi. Like, you know, with them attacking us, end-to-end chaos. Unless we have a strong DM, Nunes is not a good idea. End-to-end chaos, पागलपना, running तो उसके लिए आप लेके आओ ना, उसके लिए आप बेंच से लेके आओ ना, उसके लिए आप बेंच से लेके आओ. मतलब let's say you are behind, you have nothing to lose, फिर आप लेके आओ. I think we can play Nunes, but it has to be जब एक बहुत strong DM खेले टीम में तब खिला. I get it. You know, I would play Nunes. I think it's worth a shout. He scored there last year. पागल कर देगा उनको इधर उधर भाग के. I'd go Diaz, Nunes, Salah. I'd go McAllister, Thiago, Szoboszlai, Endo coming in for Thiago, and I'd go the back four as it is, and bust roll the dice. I think Luis Diaz, Jota, Salah. I think this is a game where Jota is one of those players ना जो मतलब always goes under the radar and मतलब हरामी टैप इन मार देता है या फिर कुछ हेडर की कोई दिखाई नहीं, डैन बॉर्न को लीप अप करके मार दिया साला हेडर, ऐसा कुछ. Jota is one of those players, snapshot, good on both the feet in the box. I think Jota खेलेगा मेरे पास. It's a good problem to have for a change in a department where you have few players to pick from. Yeah, it's true. Jota for me right now. I know Bournemouth के against first half में बहुत अच्छा नहीं खेला था. But with players like Jota ना थोड़ा सा मतलब और उसने प्रूव भी किया ना. I personally feel अभी Jota को ड्रॉप नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है, right? I don't think you can drop Jota right now. Let's see. I really don't think. और दूसरी बात जहां तक यार, and if you look at Newcastle की टीम ना, it's a damn strong team यार. मतलब you have everything in that team. गोलकीपर उनका solid है, डिफेंस उनका solid है. अभी उन्होंने लिवरामेंटो लुइस हॉल खरीद लिया है. टोनाली, I think such a good signing. Although I have my doubts regarding मतलब Italian players, और वो तो अलग बात है. He's really good, yeah. I was so impressed by him.
First day, man. What a player. What a goal. So मिडफील्ड के तो क्या कहने उनके, ब्रूनो गुमारेश है उनके पास, अलेक्जेंडर आइजैक खेलेगा अप फ्रंट, फिर they have got what about like I think Diaz versus Trippier might be your best bet. You might win that battle. Yeah. Just have a run at their fullbacks, like Trippier, and if Salah if Dan Burn starts at left back, so tell Salah, bhai tu bhag. Not that Dan Burn is deceptively quick. He looks like a big guy, but he's done so well for Newcastle, yeah, playing in that position. But yeah, I think pace can be a huge. It's going to be a very alien situation. I'll tell you why. Again, I know we're stretching this. Man City के अगर जब आप खेलते हैं, they have a lot of the ball. Newcastle will have a lot of the ball against Liverpool. So हम वो long ball खेलते हैं ना, quick. So वो पेस हम लोग डियाज साला यूज कर सकते हैं, तो शायद से तभी न्यूनेस भी इस्तेमाल हो सके, जो शायद भाई बोल रहे हैं, दैट क्विक लॉन्ग बॉल, you know, which Trent plays, which Van Dijk plays, because we will have to, ये माइंड यू, बॉल डिफेंड करना पड़ेगा है मैच में, जैसे नीदे ने बोला कि शूले से पसीना निकलेगा भाई. You know, there was a theory going around a couple of years ago. I think, I don't know when it stood after that we went for the quadruple and the disastrous season last year, that when we have 6 days to prepare for a match, instead of 3, invariably we do very, very well because our coaching setup, our players, our manager is able to prepare the team correctly. So let's see. Let's hope, guys. Let's hope. Alright guys, thank you so much for watching. मेरे पापा का भी अभी कॉल आ रहा है as we speak. Guys, subscribe to Menace in the Monk. Like this stream, Shahid Bhai. Thank you once again. Thanks for having me, guys. Good to see you. Talk to you soon. Bye guys, take care. Bye bye. Bye.